तो लाइव हो गया? हाँ दादा, लाइव हो गया। नमस्कार भाइयों। हाँ दादा, ब्लंडर्स ऑफ नेहरू जी स्टार्ट करिए दादा। ब्लंडर्स ऑफ नेहरू का आखिरी पार्ट हम लोग आज मतलब शुरू कर रहे हैं और इसका समापन भी आज ही कर देंगे। और इसमें हम लोगों ने डिस्कस करना है कि नेहरू चाचा ही बोलेंगे उनको, उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, बरदुलई, जनरल थिमैया और पब्लिक को किस तरीके से इल ट्रीटमेंट दिया और कैसा उन्होंने स्पेशल ट्रीटमेंट दिया था एडविना माउंटबेटन को। इसके अलावा हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि काबो वैली को नेहरू साहब ने कैसे गिफ्ट में दे दिया था और बाबर से कितना प्रेम करते थे वो। हम लोगों ने अभी तक जो कल वाले में डिस्कस किया था उसमें ये डिस्कस किया था कि चाचा नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सावरकर, सरदार पटेल की पुत्री मणिबेन, डॉक्टर अंबेडकर और श्यामा मुखर्जी के साथ में कैसा व्यवहार किया था, वो कल हमने डिस्कस किया था। आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा, अगर वीडियो नहीं देखा है तो दोबारा देख लीजिए। और हम लोगों ने कल ये भी डिस्कस किया था कि भाई साहब ने खुद प्रधानमंत्री रहते हुए खुद ही अपने आप को भारत रत्न ले लिया था और इतना वो एरोगेंट था कि सामने वाले को अगर उसका इक्वल कोई आदमी आ जाए तो उसको बर्दाश्त नहीं करता था, सिर्फ चमचों को बर्दाश्त करता था। तो आप लोगों को अगर हमारी सबकी आवाज अच्छी आ रही है, ठीक ठाक से आ रही है, तो थोड़ा सा इधर कमेंट कर दीजिए। अगर कोई देख रहा है तो 2 लोग देख रहे हैं, शायद 2 लोगों में से कोई भी कमेंट कर दो कि हाँ भाई आवाज बराबर आ रही है, तो हम लोग शुरू करते हैं। आज से पार्ट 13 है, मतलब 13वीं करने जा रहे हैं। हाँ, आज 13वीं करने जा रहे हैं नेहरू साहब की। वैसे तो राजस्थान में 13वीं बैन है, 13वीं करेंगे तो कोई जेल में चला जाएगा वो, फिर भी हम राजस्थान में नहीं है। अच्छा राघव साहब, आप हमारे इतने डिवोटेड व्यूअर हैं, प्लीज कभी अंदर तो आ जाइए, दर्शन तो दीजिए। आपके भी व्यू सुने तो आप अच्छे कमेंट करते रहते हैं। हम चाहेंगे कि आप अंदर आकर के थोड़ा सा हमारे को अनुग्रहित करें, जिसे वो बोलते हैं, अनुग्रहित करें। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने एम दादा से, अगर हम व्यूज का आदान प्रदान करेंगे तो अच्छा रहता है। आप बाहर से सुनते रहते हैं, थोड़ा सा अपना व्यू आकर के अंदर भी बताइए, जिससे कि पब्लिक को आपके व्यू मालूम पड़े। लोग चैट तो पढ़ते ही होंगे, लेकिन और भी चीजें जरूरी होती हैं। खैर, आपकी मर्जी, अगर आना चाहें तो मैं लिंक दे दूंगा, आप लिंक मांगिए, हम आपको लिंक दे देते हैं। लेकिन अभी मैं लिंक नहीं डालूंगा क्योंकि हम लोग डिस्टर्बेंस नहीं चाहते, ठीक है। तो मैं मजूमदार दादा से रिक्वेस्ट करूंगा कि ब्लंडर 122 पढ़ें, जिसमें कि हमारे चाचा जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बहुत पढ़े लिखे थे, उन्होंने हमेशा अपने क्लास में फर्स्ट पोजीशन ली थी। मैं डिवीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, पोजीशन ली थी। उनके साथ में कैसा ट्रीटमेंट किया था। ओवर टू मजूमदार दादा। बहुत धन्यवाद सर। मैं शुरू करता हूँ। ब्लंडर 122, इल ट्रीटमेंट ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। Among the freedom fighters, Dr. Rajendra Prasad had the best academic record, barring Dr. Ambedkar. He did his MA in economics from the University of Calcutta. Impressed by his answers, an examiner had once commented on his answers, "Examinee is better than examiner." He served as a professor in English and as a principal of a college. Later, while pursuing his law studies in Kolkata, he also worked as professor of economics at Calcutta City College. He won a gold medal in the examination of Masters of Law. He did his doctorate in law. He had a roaring law practice, which he gave up
at the peak of his career in the cause of freedom. Keeping his legal competence and suitability in mind, he was unanimously elected as the President of the Constituent Assembly. But he was not a Nehru camp follower. Nehru therefore tried his level best to sideline him, to scuttle Dr. Rajendra Prasad's chance to become the first President of India. Nehru had even bluffed. As per the book "Nehru: A Troubled Legacy" by a former intelligence officer, R.N.P. Singh, Nehru wrote to Rajendra Prasad on 10th of September 1949 that he, Nehru, and Sardar Patel had decided that the safest and best course would be to have C. Rajagopalachari as the first President of India, even though Nehru had never discussed the matter with Sardar Patel or obtained his concurrence. The bluff was exposed when Rajendra Prasad referred the issue to Patel. R.N.P. Singh says Nehru had resorted to desperate measures to prevent Prasad from occupying the position of president, and these measures included blatant lying. Nehru didn't want Dr. Rajendra Prasad to get elected for the second term as the President of India in 1957. Towards that end, he carried out a campaign, even alleging in his speeches that people in high positions have a tendency to cling to their posts, not realizing the irony of that comment on himself. However, despite Nehru's maneuverings, Dr. Rajendra Prasad got re-elected. As per Durga Das, when Doctor Rajendra Prasad was ill and it was suspected that he might not survive, Nehru was reported to have deputed Lal Bahadur Shastri, his trusted lieutenant, to search a place of funeral as far away as possible from that of Gandhi. Nehru didn't want Doctor Rajendra Prasad to get any prominence. However, Rajendra Prasad survived. When Doctor Rajendra Prasad died in Bihar and his funeral was held in Patna, Oh Nehru did shit. not attend, saying that he was busy with election campaign fund collection in Gujarat. That time, Nehru had advised the then President, Dr. Radhakrishnan, "I do not see any reason for you to go." Dr. Radhakrishnan had replied, "No, I think I must go and attend the funeral. That respect is due to him and must be paid. I think you should give up your tour and come with me." But Nehru stuck to his program. Nehru was so conceited that he wouldn't allow President Dr. Rajendra Prasad to visit foreign nations on the plea that didn't project a secular enough image abroad. In his first term, the president visited only Nepal. It was only the second term that he visited some other Asian nations, including Japan, and made an excellent impression on host nations. The US President Eisenhower invited him to the US, but Nehru scuttled the proposal. Please check Blunder 87 on what games Nehru played with Dr. Rajendra Prasad on Somnath. तो मंदिर जाने Blunder नहीं 1. दिया था ना. G. Blunder 123. Ill treatment of P.D. Tandon. The great Democrat Nehru, who had most undemocratically become the first PM, maneuvered for a complete domination over the party in 1950, just before Patel's demise, by having a Congress president of his choice elected. Nehru unilaterally declared the socialist J.B. Kripalani as the presidential candidate, even though he and Patel had earlier agreed not to support Kripalani. Patel was hurt and said, "I've been shaken to bones. How low he, that is Nehru, has stooped." Patel gave full support to Purushottam Das Tandon for the presidentship. Tandon, a respected leader, was well known for his simplicity, uprightness, and fearlessness, and as someone who could not be pushed around, a trait that perhaps rankled with Nehru. However, to undermine his candidature, the pseudo-secular Nehru tried to project Tandon as a communal, as a revivalist, the old Marxist communist Nehruvian socialist trick. This branding business started with Nehru. You brand and defame a person as fascist, communal, conservative, non-modern, revivalist, and so on, and get rid of him.
As per Nehru's definition, the conceited crypto-communists like Krishna Menon and K.M. Panikkar, who caused indescribable harm to India, were good and deserving of high public positions, but not people like Tandon. In this context, it is worth noting that Tandon was among the topmost freedom fighters who had made tremendous sacrifice for the nation. He had also vociferously opposed partition. He had opposed the AICC resolution of 14th of June 1947 moved by G.B. Pant on partition and had voted against it. He had stated that he was prepared to suffer the British rule a little longer than pay the heavy price of partition. He claimed the Nehru government had been intimidated by the Muslim League. He got a huge applause at the end of his speech, during which he said, "Let us fight both the British and the Muslim League." Nehru's objections included Tandon's attending a refugees conference and so on that didn't make sense. The arrogant Nehru even wrote these intemperate, holier-than-thou words to patriotic Tandon. Your election would mean greater encouragement to certain forces in India, which I consider harmful, wrote Brigadier B.N. Sharma. Nehru had shown a dislike for anyone who stood staunchly for his Indian identity or philosophy based on a rich cultural heritage, preservation of Hindi language, and best of our old traditions. In sharp contrast to Nehru's crude and accusative remarks, Tandon, in his elegant letter to Nehru of 12th of August 1950, wrote, "You seem to connect me with narrow communalism and what you call revivalism. There has been some matters on which you and I have not seen eye to eye. The adoption of Hindi as a national language and the partition, Tandon had opposed it, of the country with its consequential issues being the chief among them. It is a failing even with great persons to take their own geese for swans, their own aptitudes for fundamental principles. But I ask you to look at the matter with some detachment. In any case, why should it be necessary to attribute narrowness to others who differ from you? Revivalism is a confusing expression. It may mean renaissance. It may mean reactionarism. It would revive today some of the great spiritual standards that our country stood for in the past. I regard them as precious legacies. At the same time, I reject strongly the irrational dogmas that surround both Hinduism and Islam in action. I hold that all religious precepts have to be weighed by the intellect, and not one of them can be accepted merely by the authority of a book. Nehru threatened to resign if Tandon was elected president. Nehru wrote to Patel on 25th of August 1950. I am absolutely clear in my mind that in the event of Tandon's election, I should treat this as a vote of no confidence in me by congressmen or, at any rate, by those who vote in the presidential election. As a result of this, I cannot function in the Congress Working Committee or other executives. As a further consequence, I cannot continue as Prime Minister. Despite the threat and maneuvers of Nehru, Tandon won with 1,306 votes against Kripalani's 1,092. Nehru, the power-hungry person, of course, didn't resign. On the next day of the election results, when Rajaji came to meet Patel, Patel asked him jocularly, "Have you brought Jawaharlal's resignation?" Incidentally, just a day before the election, Rafi Ahmed Kidwai, Nehru's confidant, told Rajaji, "If Tandon succeeds, Nehru, does not resign, I will say publicly he is an opportunist." फिर कहा कि नहीं However, कहा? क्यों कहेगा? पता नहीं, रफी अहमद केजरीवाल ने कहा नहीं है ना बाद में, फिर मैं कभी कहा कहा ही तो नहीं नहीं हुआ। है. However, soon as Patel's death on 15th of December 1950, Nehru began his maneuverings to get Tandon out. Nehru threatened to withdraw from the Congress Working Committee unless it was reconstituted as per his wishes, an improper demand considering it was the Congress president's prerogative. एक मिनट After एक मिनट एक Patel's मिनट एक मिनट एक yes, sir. मिनट इलेक्शन कब हुआ था? 25 अगस्त को हुआ था। जी. Nehru threatened to resign if Tandon was re-elected.
Despite this, the power-hungry person of course did not resign. 1950 को हुआ था, ये दिसंबर में मर गए. हाँ ठीक है. After Patel death, however, soon after Patel's death on 15th of December 1950, Nehru began his maneuvering to get Tandon out. Nehru threatened to withdraw from the Congress Working Committee unless it was reconstituted as per his wishes, an improper demand considering it was the Congress President's prerogative. After Patel's death, it was not difficult for Nehru to exert pressure given that he was the Prime Minister who was in a position to distribute largesse and throw crumbs and would be the key person in the distribution of tickets for the forthcoming 1952 elections. Tandon tried to resist Nehru's moves, but given the immense pressure brought upon him by various quarters at the instance of Nehru, he finally succumbed and resigned on 9th of September 1951. Nehru promptly took over as the president of the Congress, in addition to being the prime minister, disregarding the Congress principle of one person, one post. In sharp contrast, during Gandhi's time, when Nehru, as president of the Congress, became the prime minister of the interim government in 1946, he had to vacate the post of party president. Further, rather than being the president for 1 year, as was the norm, he continued as the party president for 3 years, from 1951 to 1954, and left it only after he could install the obedient and loyal UN Devar as president and keep him in that position from 1954 to 1958, to be followed by Indira Gandhi as the president. Indira was followed by another Nehru loyalist, Sanjeeva Reddy, who remained the Congress president during the period 1960 to 1963. Of course, Reddy later complained that he was treated as Mr. Gandhi's chaprasi peon. Nehru sought not only his own dominance but also his dynasty's dominance. The Congress veteran D.P. Mishra resigned in protest, observing, "The last straw has been a prime minister becoming a full-fledged dictator by contriving the election of Mr. P.D. Tandon from the presidentship of the Congress and himself taking his place. I regard it as a treachery to the nation to continue in the Congress in the face of this last development. A political murder committed yesterday is a murder of democracy in the Congress. This is merely the beginning of the slaughter of democracy in India." देखिए कितना दिन पहले बताया था स्लॉटर ऑफ डेमोक्रेसी. आज वही बात इन लोग रटते हैं, कांग्रेस वाले रट कर बोलते हैं, उनको ही बोला गया है. After the above unfortunate event of usurping the Congress presidentship from Tandon, Nehru became the uncrowned king, for he headed both the government as prime minister and the party as president, and could play the political game as he chose. Nobody dared to oppose Nehru thereafter. Blunder 124. Ill treatment of Bordoloi. People often do not appreciate that one of the reasons that a state like Assam is in India today is due to the courageous stand of Gopinath Bordoloi, the first Chief Minister of Assam, who fought the Muslim League's efforts to include Assam and other parts of the northeast region in East Pakistan. The Congress party at the national level, led by Nehru, would have acquiesced to the Muslim League had it not been for a revolt by Bordoloi, backed by the Assam unit of the Congress party and supported by Mahatma Gandhi and the Assamese public. This is written by Sanjay Hazarika in his book Writing on the Wall. यहाँ पे गांधी ने फेवर किया था बर्दोलोई का. जी. This is quite strange, but that great man from Assam, Gopinath Bordoloi, despite his achievements far more than most of the Indian leaders, with the added uniqueness that, like Sardar Patel, who was instrumental in expanding the Indian territory by about 40% by accession of the Indian princely states, Bordoloi helped expand India's geographical boundary to Assam and the northeast, was not awarded the Bharat Ratna by Nehru and dynasty, while many, not deserving, got the award. Why? He had opposed Nehru before independence, and for good reason.
to include Assam in India, and that was the reason Nehru and his dynasty deprived him of well-deserved Bharat Ratna. It was only when a non-Congress Vajpayee government came to power that Bordoloi, a veteran congressman, was awarded the Bharat Ratna posthumously in 1999. Good. Blunder 125, ill treatment of General Thimayya. General Thimayya was a highly accomplished army man. He's one of the he's one of his many this here is one of his many accomplishments. As a major general in the Jammu and Kashmir War of the late 1940s, Himayah had taken his tanks to a height of about 12,000 feet on the snow-capped Zojila Pass, something unique in history, had nobody had taken tanks to such height and in such hazardous conditions before, and routed the enemy, destroying all their bunkers. In the Nehru Raj, it didn't pay to raise professional objections to the civilian handling of military matters. No self-respecting senior army officer would have attempted to caution Nehru or Menon on matters relating to the Indian Army. It didn't pay to be professional, frank and honest. You couldn't tell the truth without the fear of tongue lashing and victimization. General Thimayya, the Chief of Army Staff, made that mistake and suffered. He resigned on 1st of September 1959, miffed by Nehru's Defence Minister Krishna Menon's discourteous behaviour and his refusal to heed Thimayya's advice for better army preparation. Nehru had, however, managed to persuade Thimayya to withdraw his resignation on the promise that he would suitably look into his grievances. But after Thimayya had withdrawn his resignation, rather than reprimanding Menon and looking into the issues raised by Thimayya, Nehru went dismissive, telling the parliament that Thimayya had resigned on issues trivial and of no consequence, which had arisen from temperamental conflict. That could not have been the reason, as Thimayya was a thorough, seasoned professional, a disciplined soldier, and a great patriot. No wonder, even today, the contents of Thimayya's resignation letter remain a highly guarded secret. At that insult and double humiliation, Thimayya should have resubmitted his resignation to teach Nehru and Menon a lesson. Wrote But किया नहीं RNP ना Singh, उसने. किया नहीं बाद में सर, करना चाहिए था. Wrote RNP Singh in Nehru, a troubled legacy. The way Nehru handled the resignation of General Thimayya dealt a bad blow to the discipline of the armed forces and the self-confidence. Wrote Durga Das, if the Prime Minister was letting down and humiliating the Army Chief of Staff, he was also ignoring the fact that the General's resignation had sprung from valid grounds which were relevant in the discipline and efficiency of the armed forces at a time when the enemy's frontiers were being threatened. Publicly, Nehru was seen to be fond of Timmy. However, behind his back, the Prime Minister adopted tactics that clearly indicated that he viewed Thimayya as a rival who would challenge his position as the undisputed head of the Indian Union. Given the general's track record in World War II, Thimayya had been the first and only Indian officer to command a fighting brigade in the Arakan, where he was awarded the Distinguished Service Order (DSO), and the role played by him in the Jammu and Kashmir operations. Nehru knew he could not browbeat him. The Prime Minister's attitude towards Thimayya was damaging to the chief as well as the army. Wrote M.K.K. Nair, Krishna Menon did not respect military traditions. The army chief, General Thimayya, was an able and multifaceted person. He had become the general after meritorious service in Kashmir and South Korea. The close bonding in army is achieved by strict enforcement of discipline. Orders flow from the general and are carried out by hierarchical tiers. No one broke rank improperly. Thimayya's dignified nature brought him into conflict with the dictatorial Krishna Menon. Differences between them worsened when Krishna Menon, disregarding military discipline, began to deal directly with his favored officers.
Finally, Thimaiya went off to Europe to head the United Nations peacekeeping force, and General Thapa, who Krishna Menon believed would always be obedient to him, was made the general. To do this, Menon ignored the seniority of the brilliant General Thorak, who resigned in protest. ये जनरल थापर वही मतलब जो थापर जर्नलिस्ट जो है उसी का मतलब हाँ, बाप आपका है, चाचा था ना, चाचा। चाचा था अच्छा। After the retirement of Thimaiya, Thapar made the Chief of Army Staff (COAS) at the instance of Menon. After the retirement of Thimaiya, Thapa was made the Chief of Army Staff at the instance of Menon and B. N. Paul Jr., but whom Nehru and Menon listened to rather than Thorat, whom Thimaiya had recommended and who had a relatively much more distinguished career. Later, Thapa returned B. M. Paul's favor by making him CGS, Chief of General Staff, ignoring the much more capable officers. In the army hierarchy, the Chief of General Staff was considered next to the Chief of Army Staff. India was let down in the 1962 India-China War by, among others, Thapa and B. M. Paul. Blunder 126, Ill Treatment of Public. Brigadier retired B. N. Sharma narrates an episode in his book India Betrayed, which is upsetting. The author, then a young boy, lived in Sri Gandhi Ashram, Meerut, where his uncle was General Secretary. Nehru was to come to Meerut to deliver an election speech for provincial assembly elections of 1937 at the town hall. Upon arrival, he was angry at the arrangements. A man responsible for the arrangements bowed before Nehru with folded hands, requesting him not to leave. However, in full public view of thousands crowding the place, Nehru kicked the man, already prostrate at his feet, and kept doing so. Everyone was shocked and dismayed. Kripalani then physically pulled Nehru away. To the young mind of the author, this left a deep mark. The author writes that Nehru was arrogant and that he exulted in public display of anger. Nehru perhaps considered it a sign of royalty to be short-tempered and to show one's temper and anger and impatience publicly. Sitaram Goel described an episode when Nehru came to address a public meeting in the Gandhi grounds adjacent to the Chandni Chowk in Delhi in 1935. Goel was a student of the 7th standard then. There was a thunderous applause as Pandit Nehru came up on the rostrum, greeted the people with folded hands, and was formally introduced by a local Congress leader. But the next thing I saw made me rub my eyes. The great man had become red in the face, turned to his left and planted a smack on the face of the same leader who was standing near the mic. The mic had failed. Pandit Nehru was gesticulating and shouting at the top of his voice as if something terrible had happened. दोबारा पढ़ो इसको। Meanwhile, there was a thunderous applause as Pandit Nehru came up on the rostrum, greeted the people with folded hands, and was formally introduced by a local Congress leader. But the next thing I saw made me rub my eyes. The great man had become red in the face, turned to his left, and planted a smack on the face of the same leader who was standing near the mic. The mic had failed. Pandit Nehru was gesticulating and shouting at the top of his voice as if something terrible had happened. Meanwhile, the mic started functioning again so that he could be heard all over the place. He, Nehru, was saying, दिल्ली की कांग्रेस के कार्यकर्ता कमीने हैं, राजिल हैं, नामक नामकूल हैं। नमकौल है। हाँ, मैंने कितनी बार इनसे कहा है कि इंतजाम नहीं कर सकते तो मुझे मत बुलाया करो, पर ये सुनते ही नहीं। The leaders of the Congress in Delhi are low-bred, mean and mindless people. I have told them time and again not to invite me if they cannot make proper arrangements, but they pay no heed. This was a new experience for me. I have never witnessed such wild behavior on a public platform. Of course, those other speakers were not so big as this one. Was it the way the big ones behaved? I wondered.
I found it difficult to admire a man who had not only shouted at, but also slapped someone who was placed lower than him in life and who was in no position to hit back, and that too for no fault of the victim. Even as a young boy, I had nothing but contempt for bullies. In a public meeting in 1942, after the failure of the Cripps mission, in response to a commotion in the audience, Nehru shouted what could be heard over the mic, as described by Sitaram Goel, who attended the meeting. देखना चाहता हूँ इन कमीनों को मैं, बता देना चाहता हूँ इनको कि मैं कौन हूँ, इनके इनकी ये गंदी हरकतें मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता. I want to have a look at these low-bred people. I want to tell them who I am. I cannot tolerate this dirty behavior on their part. मैं एक शानदार आदमी हूँ. I'm a man of some stature. Much worse came after the meeting dispersed. He descended from the rostrum and started moving towards the gate where I was standing. Congress volunteers had formed a cordon around him, but as the people rushed forward and tried to touch his feet, he pushed away the volunteers and started looking after himself. He was slapping with both his hands and kicking with both his feet the people who came near him. He was wearing full boots. Some of his fans must have been badly hurt. I thought he had no business to treat his people in this cruel manner. After all, they were only trying to show their devotion to him in the only way they had learned from their tradition. बताइए सर. सीताराम गोयल. जैसे में अच्छा, ये 1935 की बात है जब अंग्रेज लोग थे. गोयल यहाँ लिख रहा है, और उसके बाद में फिर 1942 में ये तमाशा किया. मतलब इंडिया इंडिपेंडेंस नहीं हुआ था, अंग्रेज लोगों को पूरा इसके ऊपर वो था, बर्दाश्त था. हाँ, सीताराम गोयल describe another shocking episode. I happened to be in Delhi towards the end of 1947 or early 1948 and went to see my journalist friend from America. As I mentioned, he had left Calcutta for Delhi soon after India became free. As I sat down with him in the coffee house, he said, "Sita, who does this man Nehru think he is? Almighty God?" I asked him who. What happened? He told me the story of some sadhus who had sat down on an indefinite fast near Pandit Nehru's residence in New Delhi and was seeking an assurance from him that cow slaughter should be stopped now, that the beef-eating British had departed. My friend said I had gone there to take some pictures and gather a report. American readers love such stories from India, but what I saw was a horror for me. As I was talking to one of the sadhus who knew some English, this man Nehru rushed out of his house, accompanied by his sister, Mrs. Pandit. Both of them were shouting something in Hindi. The poor sadhus were taken by surprise and stood up. The man slapped the sadhu, who had moved forward with folded hands. His sister, Vijayalakshmi Pandit, did the same. They were saying something which sounded pretty harsh. Then both of them turned back and disappeared as fast as they had come. The sadhus did not utter so much as a word in protest, not even after the duo had left. They had taken it all as if it was the normal thing. I observed, but in the case of Pandit Nehru, it is the normal thing. He had been slapping and kicking people all his life. He, that is the American journalist, concluded, I do not know the norm in your country. In my country, if the president so much as shouts on a citizen, he will have to go. We take it from no bastard, no matter how big he happens to be. इनका लैंग्वेज तो यही होता है. We take it from no. बात तो सही है सर. Blunder 127. Special treatment for Edwina Mountbatten. Edwina was buried at sea. Edwina was buried at sea in 1960 as per her will, a tribute to Mountbatten's naval career. The British frigate Wakeful, which carried her body to the sea off Spithead,
a channel off southern England, was escorted by an Indian frigate, Trishul. Such importance India under Nehru gave her. Contrast this with the treatment meted out by Nehru to Sardar Patel, Netaji Subhash, Dr. Ambedkar, and Dr. Rajendra Prasad after their death that we covered above. Going by several books and materials on the web, including Alex von Tunzelmann's Indian Summer: The Secret History of the End of an Empire. While Mountbatten had several affairs, Edwina was from a rich family, indulged herself, and had many lovers. Nehru was one in that series, but was Edwina very good looking? Hardly, though she was white skinned, something brown sahibs bent down to. Tunzelman writes, "Please keep please keep this to yourselves, but she, Edwina, and Jawaharlal are so sweet together." He, Mountbatten, wrote to his elder daughter Patricia, they really dote on each other in the nicest way, and Pammy and I are doing everything we can to be tactful and help. And so Edwin and Jawar walked together among the wild strawberry bushes during the days and drove with Pamela along winding roads to the brightly lit town of Shimla in the evening. Nehru in those days was having a roaring love affair with Lady Mountbatten, added Bakhtiar, said to be with the tacit approval of Mountbatten. Further, Jinnah had been handed a small collection of letters that had been written by Edwina and Jawar. "Dicky Mountbatten will be out tonight. Come after 10 o'clock," said one of Edwina's. Another revealed, "You forgot your handkerchief," and before Dicky could spot it, I covered it up. A third said, "I have fond memories of Simla, riding, and your touch." Incidentally, Jinnah did not use the letters. अच्छा, माउंटबेटन ने हाँ, जिन्ना को लेटर दे दिए थे हाँ, ब्लैकमेल हाँ, हाँ, करने के लिए कि साले हाँ, ज्यादा हाँ। बदमाशी करेगा तो ये लिख रहा ना, Jinnah had been handed over a small collection of letters that had been written by Edwina and Jawahar. He did not use the letters. It was so kind of him. Mountbatten will be out tonight. Come after 10 o'clock. हाँ, You forgot your handkerchief and before Dicky could spot it, I covered it up. I have found I memories fond of अच्छा बाप रे. similar writing and your touch. In 1948, Nehru was officially received at Heathrow, but his first action after that was to go to the Mountbatten's small flat. For Edwina, his midnight visit was too lovely. The next day, she drove him to Broadlands, Edwina's secluded country house. Dicky tactfully ensured that he would be absent for much of the time at Dartmouth. "Edwina will be awaiting you," he wrote to Jawahar. The two of them, Nehru Edwina, alone at last in the privacy of their estate, were able to talk, laugh, चलो and cry चक्का तो together, to embrace and to press each other's hands on walks by the river. Even after Dicky turned up, the weekend was a great success, so much so that Jawahar changed his plans so that he might return the following weekend as well. Whenever he, Nehru, was in Britain for a conference or diplomatic visit, he would stay with Edwina at Broadlands. During this sojourn, Dicky Mountbatten would remove himself to the London address. बताइए, so accommodating of him. When Edwina died in an Indonesian hotel in Borneo on 21st of February 1960, a number of letters were found strewn around her, said to be the love letters of Nehru. Wrote Nehru's secretary, M. McMathai. "One thing that I could not fail to notice was that whenever Nehru stood by the side of Lady Mountbatten, he had a sense of triumph." M. O. Mathai also wrote, "Once at a reception at the India House in London, to which Attlee and several other dignitaries came, Nehru stood in a corner, chatting with Lady Mountbatten all the while. Krishna Menon turned to me and said that people were commenting on it and requested me to break in so that Nehru could move about. Sorry, requested me to break in so that Nehru could move about," wrote Rustamji.
JN, Jawaharlal Nehru, had the typical Indian weakness of being impressed by foreign women, white women. They were his favorite. On a visit to Assam, Nehru asked me to ensure that the orchids he ordered in Shillong reached Lady Mountbatten in London safely. Stanley Wolpert personally watched Edwina and Nehru together at a function in New Delhi and wrote, I was surprised at how cheerful Nehru appeared that evening and how like adolescent lovers he, Nehru and Edwina behaved, touching, whispering into each other's ears, laughing, holding hands. Lord Mountbatten himself also often referred to Nehru's correspondence with his wife as love letters, knowing better than anyone but Nehru how much Edwina adored her handsome Jawahar, as she lovingly called him. This was why Nehru's daughter Indira hated her. Reportedly, Nehru used to go to London to be with Edwina almost every year, or she used to come to India and stay with him after independence. Also, reportedly, one of the jobs of Krishna Menon as High Commissioner in London, for which he used to gladly volunteer, was to receive Nehru at the airport at any hour and drive him down to Edwina's secluded country house, Broadlands, where Nehru and Edwina could enjoy complete privacy, wrote Stanley Wolford. Nehru flew off again to London. Krishna Menon was waiting with the rolls as usual at London's airport and drove him back to Edwina's shortly out before midnight. Indira was upset by her father's unrelenting obsession with that Mountbatten lady. देखिए कैसे वो पुकारती थी, that Mountbatten lady. Indira was also very arrogant, huh? That Mountbatten lady. गुस्से में. Jawahar tried to talk Edwina into staying on with him after Dickie Mountbatten flew home in June 1948, for he knew by now that her heart belonged to him alone. Mountbatten, of course, also knew that they were lovers, as did all their close friends. Edwina's sister, Mary, hated Nehru for it. Still, he wanted her, needed her, pleaded with her. M.J. Akbar writes about the encounter of Rusi Modi, once the chief executive of Tata Steel, with Nehru at Nainital, where Nehru was staying with his father and UP governor, Sir Homi Modi. Sir Homi was very pakka, and when the gong sounded at 8, he instructed his son to go to the Prime Minister's bedroom and tell him dinner was ready. Rusi Modi marched up, opened the door, and saw Jawaharlal and Edwin in a clinch. Jawaharlal looked at Rusi Modi and grimaced. Rusi quickly shut the door and walked out. इसके बारे में क्या कमेंट करोगे यार, पढ़ते रहो, ज्यादा अच्छा है बस. Wrote K. Natwar Singh, I once asked Vijayalakshmi Pandit, Nehru's sister, if the rumors about her brother having an affair with Edwina Mountbatten were true. She was herself a diva and uninhibited in their conversation. She said to me, of course he did, and good for him. Nehru's correspondence with Edwina contained matters of national importance, for he used to share his thinking with her. Hence, they are of vital historical importance and not just something that are merely personal or of no consequence. Yet they are being treated as if they are the personal property of the dynasty and are being kept a closely guarded secret. Walpott mentions in the preface to his book Nehru, A Tryst with Destiny. He tried to access the letters but failed. While one doesn't really care for the personal side of it, considering they were two consenting adults, could such a relationship have compromised Nehru or India's political cause in any way? Edwina Mountbatten, about whose relationship with Nehru a lot has been written, would have most likely persuaded Nehru to go by the counsel of Mountbatten and take the Kashmir matter to the United Nations. But one can't be sure. Maulana Azad, a pro-Nehru person, expressed bewilderment in his autobiography as to how a person like Jawaharlal was won over by Lord Mountbatten. Mentions Nehru's weakness of being impulsive and amenable to personal influences and wonders if Lady Mountbatten's factor was responsible.
Reportedly, Mountbatten himself admitted that he used his wife to get an insight into Nehru's mind and, where needed, influence Nehru when he failed to bring him round to his view. Philip Ziegler, Mountbatten's biographer, stated that Mountbatten encouraged loving relationships between his wife and Nehru to this end. 12. Even more blunders and related aspects. Nehru gifted Cabo Valley. The Cabo Valley is a 100,000 square kilometer highland valley on the Indian Burmese border that is sandwiched between Manipur and North Myanmar Burma and is peopled by ethnic minorities like Kadu, Kanan, Meitei, Mizo, Zo, etc. It is very fertile and is well known for its wood products like teak. There had been a number of wars between the Manipuris and the Burmese, and later among the Manipuris, the Burmese, and the British. That Cabo Valley belonged to Manipur was confirmed through the Treaty of Yundabun, signed on 26th of February 1925. Further, as per the Treaty of 25th of January 1934, signed at Langkhabal between the British and the Burmese commissioners, the British government was required to pay a monthly amount of 500 Sikka rupees to the King of Manipur for leasing out Cabo Valley to the Burmese. The said monthly payment was being paid till 1949. The treaty also stipulated that the said monthly payment would cease as and when the Cabo Valley was reverted to Manipur. Manipur gained independence from the British rule of 57 years, from the period 1891 to 1947 in 1947, and 2 years later in 1949 it merged in the Indian Union during the reign of the last King Bodhi Chandra. Nehru generously gifted, as if it was his personal property, the Cabo Valley to Myanmar Burma as a token of peace without taking the consent of the parliament. The preliminary friendly negotiations for the valley began in 1953 when the premiers of the two countries, Jawaharlal Nehru and U Nu, visited Manipur and Nagaland, and finally was ratified by the boundary agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Union of Burma, signed at Rangoon on 10th of March 1967 when Indira Gandhi was the Prime Minister. Paying respects to Babur. क्या यार शिट सब बाप का राज था इन लोगों का. अगर ये रहता था हमारे साथ में तो जो आज की डेट में पूरा बेच मणिपुर में देता, आग देश को लगी थी बेच नहीं देता, लगती थी वो. ये बेच देता पूरा देश को. अरे बेचा, बाप रे. आधा तो मैं बेच ही दिया. Paying respects to Baba. Zairuddin Muhammad Babur, 1483 to 1530, the Uzbekistan-born direct descendant of the mass murderer Tamerlane of Timur, was the founder of the Mughal dynasty in India and was India's first Mughal emperor from 1526 to 1530. Tuzaki Babari, Babur's autobiography, records Babur's campaign in northwest India of killing immense number of Hindus and Sikh civilians and building towers of skulls of the infidels and hillocks. Baburnama too records massacre in Hindu-Sikh villages and towns. Babur desecrated and destroyed many temples. Guru Nanak was Babur's contemporary, and Nanak, in his Babur Bani, has described in detail the atrocities committed by Babur and his army, to which he was an eyewitness. Having attacked Khorasan, Babur terrified Hindustan. The creator himself does not take the blame, but has sent the Mughal as the messenger of death. There's so much slaughter. Those heads of women, adorned with braided hair, with their parts painted with vermilion, whose those heads were shaved with scissors and their throats were choked with dust. The order was given to the soldiers, who dishonored them and carried them away. Since Babur's rule has been proclaimed, even the princes have no food to eat. He burned the rest houses and the ancient temples
He cut the princes limb from limb and cast them into the dust. Given the above, no humanitarian or right-thinking person or an Indian patriot can ever think of paying respect to Babur. But Nehru and his dynasty appear to be an exception. Reproduced below are extracts from the article Why Babur Beckons Nehru Gandhi. Number 1. Nehru visited Babur's grave on 19th of September 1959. 2. Indira Gandhi visited Babur's grave in 1968 as revealed by Natwar Singh in his book Profile and Letters. Indira Gandhi, Rajiv Gandhi and Rahul Gandhi visited Babur's grave in 1976. Rahul, Doctor Manmohan Singh and his Foreign Minister Natwar Singh visited the grave of Babur in October 2005. The then National Security Advisor M.K. Narayanan had also accompanied the former Prime Minister. The episode of Indira Gandhi bowing for a few minutes in silence at the grave of Babur in 1968, mentioned by Natwar Singh, did cause some commotion among Hindu blog writers, but not of the mainstream English media. Significantly, none of the Nehru Gandhis have ever cared to visit the grave or tomb of the brave Prithviraj Chauhan, located in Ghazni, some distance away from Kabul. Evaluating Nehru. Can a country attain greatness even if its leaders are Lilliputs, and vice versa? Can the country's leaders be considered great even if the country goes to dogs or remains wretchedly poor and achieves only a fraction of what it could have? You can't do justice to evaluating a person by just talking in general terms like he was a great patriot, he sacrificed so much, he ensured unity of India, as if under someone else India would have got divided. He made India a democratic country. He was a founder of India's foreign policy and so on. Often we talk of greatness of a political leader in India. It is greatness by definition, not greatness evaluated by factual material achievements. For a fair explanation, you have to adopt a right approach, a proper set of rules, the do's and the don'ts. Rules for evaluation, do's. Rule 1, छोड़ do. दो, ये रहने दो, क्या पढ़ने का इसको तो बोल रहे हाँ, छोड़िए. हैं। ये पढ़ो, unless a leader Unless a leader scores high as per rules 1 and 2, he or she cannot be adjudged as great. This is quite logical. Do you not evaluate Sachin Tendulkar's cricket on his personal goodness? Do you not evaluate Sachin Tendulkar's cricket on his personal goodness? You evaluate it on his performance on the field, on the runs scored, not in isolation or as an absolute, but in comparison with others. On these criteria, one can say that Lky Lee Kuan Yew of Singapore was indeed a great leader. You evaluate Ratan Tata for his business performance by evaluating not Tata the person, but the Tata Group, its actual business and financial performance. What was the business and the financial status of the Tata Group when Ratan Tata took over, and what was it when he relinquished control? And how did it compare with the progress made by other business houses? If the performance of the Tata Group is evaluated to be bad, then it is the performance of Ratan Tata which would also be evaluated as bad. You would not try to lessen Ratan Tata's bad performance by either blaming his subordinates or colleagues or offset the same by stellar personal qualities. This is the right approach. Keeping the above rules in mind and checking the major blunders of the Nehruvian era that we highlighted above, Nehru's overlong 17-year period stretching from August 1947 to May 1964 was an unmitigated disaster. Nehru fails to measure up both as per Rule 1 and Rule 2 of the evaluation explained above.
Nehru's balance sheet is deep in red on all the major counts. Unfortunately for the millions of Indians, particularly its poor, Jawaharlal Nehru, despite his best intentions, ended up as an all-round comprehensive failure, unwittingly laying the foundation of India's misery. Sadly, Nehru's dynasty, rather than retrieving India from the mess, reinforced those blighted foundations. As per an article by Rajiv Srinivasan in Rediff.com, Nehru himself was a disaster for the nation in almost every way conceivable. Nehru has left behind a corrupt, cronyist, decaying Stalinist ideology. Upon investigation, it is hard to escape the conclusion that Nehru was pretty much wrong about practically everything. I'm sure that he had good intentions, but the results are definitely wanting. Clearly, this nation has paid a very big price for believing in Nehru. We gave him our explicit trust, and it turned out to be, at best, only partly worthy of it. Greatness, by any definition, often we talk of greatness of a political leader in India. It is greatness by definition, not greatness evaluated by factual material achievements. Very often, we find Nehru evaluated as per rules 3 to 6, even earlier, the don'ts. People, even intellectuals, social commentators, politicians, senior journalists, and writers make generalized statements to eulogize him, even as they show indulgence to his gross failures. Unfortunately, this led to giving him a stature he didn't deserve. Falsehood is always harmful to the nation. He was so drunk in his own false image that he arrogantly went about with his own wisdom, ignoring or belittling others, and committed blunders after blunders with no one to stop him. Ultimately, it harmed the nation. It didn't stop at that. He was given such a projection that his descendants found it easy to claim the topmost position without working for it or deserving it. So those who unjustly praise or eulogize a national leader do disservice to the nation. One wonders where Nehru would have been had he not been Motilal's son, and had Gandhi not anointed and sold him. Alternate posers to help evaluate. ये ऊपर का रेफरेंस सब डाल रहा है डिफेंडिंग द इंडिफेंसिबल जाने दो ना यार, क्या इसको क्या? ये वही पुराना चीज ही बता रहे थे पीछे को लेके जा रहा है वो। हाँ, हाँ, ये पढ़ लेता हूँ डिफेंडिंग द इंडिफेंसिबल dreamer and an idealist or a Nawab of cluelessness, unable to rebut Nehru's faulty handling of many issues like Kashmir, India-China war, economy, and so on. His admirers have invented an innovative alibi. Nehru was a dreamer and an idealist. Dreamer implying he had great vision, an idealist implying that he was a man of high principles, lofty moral standards, and impeccably cultured, and hence, thanks to the machinations of his unprincipled adversaries, he lost out on certain counts. Rather than a dreamer or an idealist, Nehru was indeed, as someone has said, a nabob of cluelessness. One would have highly appreciated Nehru as a dreamer if he had helped millions realize their dreams that they had upon independence. Sadly, the fond dreams of millions turned into nightmares. Was dreaming of a political leader at the topmost responsible position, an elitist luxury, and an indulgence afforded by the exclusive environs of Luton's Delhi. Talking of idealism and high principles, may one ask, what were those high principles that prevented Nehru from finding a negotiated settlement of Indo-China borders? What was that lofty ideal that allowed Nehru to mutely accept erasure of a peaceful neighbor, Tibet, as a nation? What were those principled compulsions that drove Nehru to refuse Tibet's repeated pleading to raise its issue in the United Nations? What were those high moral standards that forbade Nehru to ensure Sri Lanka meted its Tamil citizens fairly?
treated, forbade Nehru to ensure Sri Lanka treated its Tamil citizens fairly. What was this idealism that allowed nepotistic promotion by him of his daughter? Where was the great morality in protecting the corrupt, which he tried for some of his colleagues? Was it conscionable for him to continue as Prime Minister after the debacle in the India-China war? Why the cultural finesse of many of his acts, highlighted under the chapter Hubris, ill-treatment of others, questionable, innovative counterfactuals. In politics, stupidity is not a handicap. Napoleon Bonaparte. Unable to eulogize Nehru on many facts, many admirers on the self-serving assumption that a person other than Nehru would not have been able to do what Nehru did, resort to innovative counterfactuals like, had it not been for Nehru, India would have not remained united and secular. But for Nehru, there could not have been, there would have been no democracy, and the citizens would not have enjoyed freedom. If facts don't help you, go by presumptions and probabilities. What if one advanced an alternate counterfactual and argued that an alternate person, like say Sardar Patel or C. Rajagopalachari or Dr. B.R. Ambedkar as Prime Minister, would have made India more united, more secure, more secular and free from communalism, more democratic and much more prosperous, and India would have been well on its way to becoming a first world nation by 1964. Conclusion. Nehru's leadership is unique not only in terms of the paucity of achievements or the large gap between the potential and the actuals, or a very poor show compared to other comparable nations, but in the blunders that he made. Other leaders do make mistakes, but Nehru can beat them all hands down. The number, the extent, the comprehensiveness of the Nehruvian blunders can't be matched. Comprehensive. Other leaders blunder in one or two or three areas, not Nehru. He was a 360 degree. Was a 360-degree coverage. He blundered in practically all areas and sub areas, and many ways: external security, internal security, foreign policy, economy, education, culture. It's a long list. An examination of his record leaves you gasping. There's a very cryptic label to capture the essential Nehru, Nabab of cluelessness. Nehru bequeathed a toxic, political, dynastic and undemocratic, economic, socialistic, industrial, inefficient and burdensome public and state sector, agricultural, neglected and starved, geographic, most borders insecure, administrative, incompetent and corrupt babudom, historical, Marxist and leftist distortion, educational, elitist, and no universal literacy, and cultural, no pride in Indian heritage legacy. Of course, quite irrespective of the fact that the balance sheet of the Nehru period was deep in red. It cannot be denied that Nehru meant well. It was another matter, that is erroneous understanding of economics, foreign affairs, external security, and many more things led to policies that proved disastrous for the country. Also, he was well intentioned, but then road to hell is often paved with good intentions. The road to hell is often paved with good intentions, said parliamentarian Dr. B.N. Singh. एक Just मिनट एक three मिनट क्या months, बोला? He was the well road to intentioned, but good the intention, the road road to to hell hell. is Sarcastically, he's saying this sarcastically. This is sarcasm. The road to hell is often paved with good intentions. Sa- this road to man is hell. being sarcastic. Had parliamentarian Dr. B.N. Singh just 3 months before his death of Nehru, said parliamentarian Dr. B.N. Singh just 3 months before the death of Nehru. If you take a glimpse of the rural India, you see a more ghastly spectacle, indescribable poverty and misery in every village, a daily income of between 19 to 31 naya paise for over half a million of the population. Population increase outstripping national income growth, illiteracy still between 70 to 80%, caste
caste apartheid spreading within society like a fungus disease, an epidemic here and a famine there, corruption in the police, graft in government, cynicism and patronage in higher politics, bullying and intimidation in lower, gloom and frustration written large on the face of the people. Required de-Nehrufication and dynastification. One may say, what, why sweat over Nehru? He is long gone physically, but much of his thinking and policies still unfortunately survive. It is necessary to understand that he followed a wrong path, and the nation needs to gain freedom from those ideas and forge ahead. There's nothing personal here. Nobody has said anything against Nehru as a person, but if thanks to his policies millions suffered, and thanks to the continuance of his policies millions continue to suffer, then it is not a dead historical question. Freedom is not just political freedom. The meaningful freedom for individuals are freedom from hunger, freedom from poverty, freedom from insecurity, freedom from life of indignity, freedom from injustice, freedom from the stinking squalor of our metros, cities, towns, and villages, freedom from disease, freedom from corruption and nepotism, freedom from illiteracy, freedom from ill governance, freedom from kleptocracy, freedom to advance in life, freedom to prosper, freedom to lead quality life, and freedom to create quality life for our descendants. Those freedoms Nehruvian policies deprived us of, and thanks to the systems put in place by him, continue to do so, though to some extent there has been a creative destruction thanks to the initiatives of Narasimha Rao and Vajpayee and now Modi. यहाँ सर बोल रहा है कि अभी तक सब बचा हुआ है, अभी भी है the reminiscence of the blunders. To attain those freedoms, the two necessary preconditions are freedom from the Nehruvian claptrap, de-Nehrufication, in other words, and freedom from dynasty. That is the dynastification. Freedom from dynasties not only at the national level but also at the state level. Observed Sitaram Goel on Nehruism. Today I view Pandit Jawaharlal Nehru as a bloated brown side and Nehruism as the combined embodiment of all the imperialist ideologies, Islam, Christianity, white man's burden, and communism that have flooded this country in the wake of foreign invasions. And I do not have the least doubt in my mind that if India is to live, Nehruism must die. Of course, it is already dying under the weight of its sins against the Indian people, their country, their society, their economy, their environment, their culture. What I plead is that a conscious rejection of Nehruism is, in all its forms, will hasten its demise and save us from the mischief which is bound to create further if it is allowed to linger. तीसरी खत्म. Thank you very much, sir. लास्ट में कैसा लगा सर? मुझे क्या पब्लिक को देखना चाहिए ना, मैं तो एंजॉय कर ही रहा था. प्रदीप जी, भारती साहब, कुछ बोलो भाई. हो गया खत्म रामायण. नेहरू जी की तीसरी कर दी. आज 13वीं हो गई नेहरू साहब की. मैं भी लास्ट में दुआ भी पढ़ दी कंक्लूजन में कि आप जन्नत जाए वापस ना आए. पता ये वही है डांस ऑफ द डेविल, ये कह सकते हैं. करेक्ट सर, करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट सर. और आज भी लोग कर्नाटका में
बीजेपी ने तो जो किया किया, लोगों को कुल्हाड़ी पर पांव रखने का है। जैसे राजस्थान में गहलोत सरकार जब आई पिछले 5 साल, तो क्या स्लोगन पता लग रहा था कि बीजेपी से बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। तो क्या मिला? The road तो to hell तीस is always with good intentions. अभी पढ़े ना सर आप? The road to hell हाँ, is always with good intentions. तो वो 300 साल पुराना शिव मंदिर तोड़ दिया ना उन्होंने राजस्थान में। क्या कर मचाते रहो शोर, 2 वोट और। हिंदू अपने आप को जब तक खत्म नहीं कर लेगा ना, तब तक शांति नहीं होगी। शांति से नहीं बैठेगा। आपको आपको मैं बड़े ऑनेस्ट ये बताता हूँ दादा, पिछले 2 साल और खासकर 8-9 महीने, ऑलमोस्ट साल हो गया एक्स मुस्लिम चैनल्स पे। जी जी अब जब हिंदू को इस तरह का लड़का या लड़की जाके शादी की बात करता है कि मैं मोम से शादी कर लूं, और जो बेवकूफ़ी हिंदू करता है, मुझे पहले दुख होता था। सही बता रहा हूँ, मुझे बहुत दुख होता था। अब धीरे धीरे मैं भी उस तरफ बढ़ रहा हूँ। एक्सेप्टेंस पहले होता है ना, एक डिनायल होता है, जी जी फिर जी आदमी जी मोर्निंग में होता है, यू एक जी जी स्टेज, जी गो थ्रू द स्टेज जी जी दादा। जी 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 आप समझते हैं, मैं यू समझ रहा हूँ। टेल मी। हाँ, आफ्टर आप द डेथ ऑफ अ लॉजिकली स्टेप बाय पर्सन, स्टेप। नहीं, हाँ, आफ्टर द डेथ ऑफ अ वेरी नियर और डियर वन एट होम, वैसा ही होता है। वंस फर्स्टली यू हाँ, स्टार्ट क्राइंग, देन यू कांट एक्सेप्ट हिज डेथ, then gradually you are in a mourning state, you discard everything, you became, lead the life of a hermit. ठीक है, हाँ। करते करते gradually you find that the world is moving along, so you also feel that it's always better that you move along too for your own benefit. हाँ। So we accept that what is to be done. सो व्हाट आई वाज सेइंग कि मेरे को अब आई हैव नो, वो क्या कहते Mercy, हैं, पेन फैक्टर या मर्सी के यार, पेन क्या, कि मर्सी क्या, बोलिए ना, नो मर्सी लेफ्ट। कि, कि, पेन तो कि क्या कर पेन रहे हो तो यार। पहले होता था सर, पेन तो पहले होता था। नाउ देयर इज नो मर्सी लेफ्ट। अभी लगता है कि लेट देम गो टू हेल, दे आर लेट देम। डेस्टिन्ड टू रॉट इन हेल। हाँ, आप जो लोग हैं, तो वो कहावत है, भाग्य आवाज जो देके है जन्म लेते डिस्टॉर्टेड। हैं। ठीक है, ठीक। हाँ, मैं थोड़ा लैपटॉप से दूसरा, दादा वो कहते जी हैं जी ना नॉर्थ इंडिया में, या कि यू आर बॉर्न इन अ फैमिली, यू आर बॉर्न विद योर डेस्टिनी। आप किसी गरीब घर में पैदा हुए हैं, अमीर घर में पैदा बिल्कुल हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ब्राह्मण है, वो आपकी एक समझ लो डेस्टिनी है, उसमें आपका कुछ नहीं है। ठीक है। उसके बाद बिल्कुल दादा, एक एज तक यू आर लेड बाय योर पेरेंट्स, टीचर, एवरीथिंग। उसके बाद आपके अपने कर्म है। लेट्स से यू आर आउट ऑफ कॉलेज बाय 21 ऑन एन जी एवरेज। जी कॉलेज में आपको पढ़ लिया तो देख लिए, उसके बाद आपके अपने कर्म है। अब आप किसी को ब्लेम करना बंद कर दो। यू स्टार्ट बिल्कुल योर सर। जर्नी, आपने कुछ डिसीजन गलत लिए, कोई बात नहीं, लेसन्स लर्न। लेकिन क्या है, डू नॉट डेफिनेटली। रिपीट द सेम मिस्टेक। तो बात वही होती है दादा, इंग्लिश की कहावत है, इफ यू फूल मी, शेम ऑन यू। इफ यू फूल मी ट्वाइस, शेम ऑन मी। बस। करेक्ट। इफ यू फूल मी वंस, शेम ऑन यू। इफ यू फूल मी ट्वाइस, शेम ऑन मी। इसके बाद भी अगर कोई हिंदू 35 40 50 साल तक भी वही भाईचारा और ये कर रहा है, तो भैया गो टू देन हेल। लेट अगर हिम गो आपको टू हेल। जाना है, हाँ, यू गो टू हेल एंड हैव अ गुड लाइफ। मैं ये कह सकता हूँ, हमने जो कर रहा था दादा कर लिया। वी आर शेयरिंग बिल्कुल आवर सर। स्टोरी ऑफ आवर पेरेंट्स, व्हाट वी हैव सीन। उसके बाद भी अगर आपको नहीं है, तो जय श्री राम। क्या करे दादा। ये मैं भी मानता हूँ, जैसे मेरे घर में जितना मेरे से होता है मैं कर रहा हूँ, उचित शिक्षा दूंगा। जिसको लेना है लेगा, जिसको नहीं लेना है वो अपना भुगतेगा। फिर आई कैन नॉट डू एनीथिंग, आई कैन नॉट हैंड एवरीथिंग नहीं, ऑन अ प्लाटर। ये दादा, आप आप कल की बात सोचो, कल की बात याद करो।
कि वीपी दादा ने अपने, उनका एक लड़का है उसके बारे में क्या बोला। वीपी दादा, बुरा मत मानना, अगर वीपी दादा का यंग लड़का कहता है कि आप मुस्लिमों को, भाई यहाँ पर आपके, अब सुनो, यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हैं जो डिस्प्लेस हो गए। सुने ना मेरे चाचा जी को, रोटी के लिए वो 7 साल का बच्चा रो पड़ा। जी जी हम मतलब 83, ही इज ऑलमोस्ट 83, विद इन कपल ऑफ मंथ्स ही बी 83, शायद अगस्त में हो जाएंगे। वो बच्चा, वो मतलब इंसान आज भी उस 7 साल की उम्र में, जब वो वहां से आया और कुल्लू मनाली या हिमाचल में था अपनी माँ को खाने के लिए, ठीक है, कभी उसने खाने की कमी नहीं थी घर में, वहां पेशावर में, और वो रो पड़ा। लेकिन सर ये सब भूल जाना चाहिए, ये सब भूल नहीं जाना साहब, चाहिए। नहीं 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 दादा, मैं कहता हूँ कुछ उनको चीजें बोल रहा भूल हूँ, लेनी चाहिए। आप नहीं आप मत भूलो, लेकिन उनको भूलना चाहिए, बिकॉज ये नहीं कम अ दादा, नहीं लॉन्ग वे। भूलती। क्या दादा कुछ, कुमार साहब, आप भी ऐसा बोल रहे हो? कोई घाव अगर लग जाता है तो वो भर जाता है, लेकिन उसका स्कार रहता है हमेशा, वो भूल स्कार सर भूल नहीं रहता है रहता है, दादा, जाता। मेरा वो भी ना। है। हाँ, सर मेरा भी है, लेकिन मैं माइंड को जो है घुमा देता हूँ, क्या करूँ बताइए। नहीं, कोई वो सुनने वाला ठीक है, तो है नहीं। कुछ नहीं कर सकते, अकेले लेकिन आया हूँ, अकेले ही जाऊंगा। मौका मौका पड़ने पर उसको एक्सप्रेस करने से सर थोड़ा एक सा बात मेरे मैं बोल ख्याल रहा में हूँ, आदमी का दिल हल्का हम लोग, होता है। मैं ये बोल रहा हूँ, सर अकेले आया हूँ, अकेले ही जाऊंगा, वो तो है, अकेले ही अपनी रहूंगा लड़ाई तो मैं, खुद ही लड़नी पड़ती है मेरे भाई, कोई किसी का साथ नहीं देता है। कोई अपना नहीं है। मैं तो इस किताब को पढ़ने के बाद में इतना इमोशनल हो रहा हूँ कि जी हमारे जी तो जी, स्कूलिंग जो हुई थी उस समय तो जवाहरलाल नेहरू साहब थे, बिल्कुल बिल्कुल। लाल बहादुर शास्त्री थे, इंदिरा जी थी। इंदिरा जी जब सब लोगों ने हमको शुरू बेवकूफ में मरी बनाया। है उस समय हम IIT दिल्ली में थे, तो हमारा तो स्टूडेंट पीरियड पूरा पूरा स्टूडेंट लाइफ इनके इनके ही उस अम्ब्रेला के नीचे गई है। हम लोगों ने किस तरीके से सर्वाइव किया होगा। सर मेरे घर में जहाँ माता जी रहती है ना, वहाँ इंदिरा गांधी का साइन किया हुआ उनका अपना फोटो है, उनका अपना ऑटोग्राफ दिया हुआ। अच्छा, राजीव गांधी के साथ मेरे सिस्टर, वो लोग पढ़ी है वहाँ विश्व भारती में, चांसलर इज द प्राइम मिनिस्टर ऑलवेज। तो प्राइजेस जो है नरसिम्हा राव साहब एक दफे दिए थे, और एक सिस्टर को राजीव गांधी, मतलब सिस्टर के रूम में वो आए थे, तो उतना थोड़ी पता था। हम लोग जो आज पढ़ रहे हैं, उस समय तो यूज्ड टू फील ग्रेट, अरे भाई प्राइम मिनिस्टर आया मेरे सिस्टर के पास, हाथ से अपना लिख के दिया है। अभी सब है वो रखा हुआ, मैं बता रहा हूँ। नाउ आई फील लाइक वॉमिटिंग कि व्हाट हैपेंड, आई लिटरली यूज द वर्ड वॉमिटिंग। कैसे कैसे लोग थे, मतलब कैसे बेवकूफ बनाया गया हम लोगों को, कर नहीं, शादी। वो जो आदमी है आपके यहाँ का ही है, वो रामचंद्र गुहा जो देहरादून में रहता है। वो हरामी आदमी है सर। हाउ द हेल ही इज राइटिंग सो, ही इज यूटिलाइजिंग नेहरू लाइक एनीथिंग। क्या है उसको, क्या मिला होगा, इतना सर ये अप्रिशिएट करता हिस्टोरियंस है वो, नहीं है, नेहरू इरा ने ये कर दिया, नेहरू these are ने वो not कर दिया। historians, these are not historians, they haven't done any worthy research। इनको बिठाया गया इन प्लम पोजिशन, and they are enjoying that। इस किताब ने तो काफी आंखें खोली हैं। और बिल्कुल सर। मतलब 1967 के जब इलेक्शन हो रहे थे, जनरल इलेक्शन हो रहे थे, उस समय हमारे गांव में या हमारे टाउन में, वहां पर जो आज की डेट में केशव प्रसाद मौर्य का कंस्टिट्यूएंसी है, जी जी जी। सिराथू, वहां पर नारे लगते थे, गली गली में शोर है, इंदिरा गांधी चोर है। तो हाँ जी, हमें हाँ समझ जी, में नहीं मुझे आता भी था, याद छोटे बच्चे थे हमारे को, पिताजी से पूछते थे, तो बोले जब बड़े हो जाओगे तुमको मालूम पड़ेगा। अब वही बड़े हो जाओ क्या मतलब है। 72 में जब 25 साल हो गए थे, तब हमारे को स्कूल में या वहां पर 15 अगस्त के टाइम में लड्डू दे दिए गए थे, झंडा फहरा दिया गया था, नन्ना मुन्ना राही हूँ और पता नहीं क्या, वो हाँ हाँ, जय वो हिंद जय सब हिंद कराया था। देश और भक्ति सिपाही में। इसके महात्मा गांधी के जन्मदिन के टाइम में जब 100 साल हो गए थे उनके, 69 में हमारे से भाषण दिलवाया गया था। और 14 नवंबर के आसपास में हमारे जो स्कूल के मैनेजर साहब थे वो बोला करते थे, क्या वो पता नहीं क्या, कंबल की गुदड़ियों में सोते थे जवाहरलाल और जेल में पढ़े हैं, ये पढ़े हैं, वही पढ़े। अगर इस तरीके से वो हेडमास्टर साहब या फिर मैनेजर साहब नहीं ग्लोरिफिकेशन। बोलते तो स्कूल की मान्यता रद्द हो जाती थी उनकी। जी ये जी। हालत था शायद। तब
हम लोगों एक्चुअली ने भी किया है सर, हम लोगों ने भी, मेरे हम भी ख्याल किया है में, ये चीज। हाँ, मेरे ख्याल में इंडिया का जो अवेकनिंग शुरू हुआ है वो 1991 नरसिम्हा राव के आने के बाद ही शुरू हुआ। जी जी। पीपी सिंह ने भी बहुत कम एप्लॉज किया था, बहुत कम एप्लॉज किया था। ही वाज ट्रीडिंग ऑन द इंदिरा जी लाइन लाइक। अच्छा, ये आदमी जो है ये पक्का ठाकुर सिंह है? आई हैव डाउट्स। ये प्योर ब्लडेड ठाकुर है? हाउ कैन ही बिहेव लाइक दिस? No, he was adopted, na? He was adopted. He was not a real king. अच्छा अच्छा, तब इसीलिए अब समझ में आ रहा है, अब समझ में आ रहा है। बिकॉज अ प्योर ठाकुर विल नॉट एक्ट इन द मैनर इन विच ही यूज्ड टू एक्ट, बोथ ठाकुर मेंटली तो एंड। होगा वो, लेकिन वो मतलब कोई ऐसे नहीं ही, सर, कोई नौकर का तो बोलना नहीं हाँ, चाहता वैसा हूँ कुछ सर। होगा, किसी का ले लिया होगा। द पर्सन वुड हैव बीन, द मदर फादर वुड हैव बीन सबसेरिएंट टू द राजा ना, ऐसा कुछ हुआ जी होगा। जी जी, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता सर। इफ यू स्टडी दिस जेंटलमैन केयरफुली, उसका एक्शन आप देखेंगे क्लोजली, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इतना भी बदमाश और ठाकुर इतना बुरा नहीं हो सकता। नहीं, दिस मुझे तो मैन वाज, लगता है उस समय जो इलाहाबाद के लीडर थे ना, सारे के सारे चमचे ही थे। जी 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 मतलब मैं तो उस समय देखता हूँ ना, कितने कैसे जैसे नित्यानंद तिवारी हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का था। हेमंत बहुगुणा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का था। शालिग्राम जायसवाल, राजेंद्र वाजपेयी, जितने भी इलाहाबाद के बड़े बड़े लीडर हुए थे, लाल बहादुर शास्त्री, मतलब जी जी, had he not been चमचा जवाहरलाल नेहरू, he would have not been बिकम given द, हाँ, independent charge of portfolio कि हाँ पे ठीक है तुम रन करो। That means he was also a चमचा ना। जी जी और सही बात तो ये है, आज मैं एक चिट्ठी पढ़ रहा था, मैं तुम्हारे को, मतलब यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा पढ़ा लिखा आदमी 1946 में एक बुक लिखता है, और उसमें उसमें वो जो ये जो कल्ट वाले हैं, इस्लामिक कल्ट वाले हैं, उनकी जी। पालिश मालिश करता है यार वो। ही ट्राई टू प्लीज। मैं उनको बोला गया होगा, उनको बोला गया होगा कि तुमको लिखना पड़ेगा। अब अंदर का कहानी तो हमें पता नहीं है, कुछ तो आज जैसे पढ़कर आप समझ ही रहे हैं ना। आई वो वाज लिटरली, सरप्राइज कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा आदमी ऐसा लिख रहा है। मैं उनको वो मैं बोला गया कल होगा लिखो, उसकी, मैं तुम्हारा एकदम 12 बजा देंगे, कहीं का नहीं छोड़ूंगा मैं। Because this man was a dictator basically, and with Krishna Menon and these people around, all these communists, सबको डराता होगा कि थोड़ा इधर उधर करोगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसको हम लोग ग्रेटेस्ट फिलोसफर बोलते हैं, हाँ जी हाँ जी। जिसके बारे में टीचर्स डे मनाते हैं, दैट इडियट वाज आल्सो लाइक दैट। नहीं नहीं all these नहीं learn, नहीं, ये नहीं if करना, वो all नहीं these करना, learned क्या मतलब है? persons, नहीं, if all these learned persons kowtow, वो वर्ड सही है, kowtow before an illiterate person, then God help the country। सबको ये प्रोटेस्ट करना चाहिए था इमीडिएटली। तो आपस में लोग बटे हुए थे ना, एक आध रिबेल होंगे भी तो उनको दबाया गया फिर कि मत करो ऐसा, तुमको रहना है कि बाहर जाना है, बताओ। उनके दोस्त यार ही बताए होंगे कि मत करो यार, छोड़ो, मजे मार रहे हो, अपना चुपचाप रहो। पोजीशन रखना है कि नहीं रखना है? एम दादा, जी सर। आपको शायद पता ही होगा, प्रॉफिट मोहम्मद की बर्थडे का किसने सैंक्शन किया था? अपना कौन से प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि प्रॉफिट मोहम्मद की के बर्थ की भी छुट्टी होनी चाहिए? यू नो इंदिरा दैट? गांधी। नहीं, वीपी सिंह। अच्छा अच्छा, मैं सोचा था इंदिरा गांधी। आई वाज नहीं, हैविंग, उसका नो, इफ आई एम रॉन्ग आई स्टैंड उसका करेक्टेड होम सर। मिनिस्टर कौन था? वही था ना, अपना मुफ्ती मोहम्मद सईद। हाँ, फिर तो वो जो कहेगा इसीलिए, वही करेगा ना वो। नहीं दादा, हुआ तो अंडर नहीं उसकी लीडरशिप में हुआ ना। नहीं, लेकिन आदमी का बैकबोन नहीं होगा, कुछ सोचेगा नहीं, वो नहीं, बैकबोन इंडिपेंडेंट, का। इंडिपेंडेंट कोई सोच नहीं है जैसे हम लोग हैं। अब कुछ भी आप समझा दोगे मुझे, हाँ हाँ तो करूँगा मैं, लेकिन मेरा भी तो अपना कुछ राय है। मतलब मैं लेटर ऑन आई विल ट्राई टू इम्प्रेस अपॉन यू दैट दिस इज नॉट करेक्ट। आप नहीं सुनोगे तो आई माइट रिफ्यूज ऑल्सो। उसमें दोस्ती टूट जाए, जो भी हो जाए, अलग बात है। एक आदमी पोजीशन में है, एक आदमी मेरा पोजीशन तो होल्ड एक कर रहा है।
एडवोकेसी में क्या एक फंडा है ना, वो जो लीगल एक प्रिंसिपल है, that if you are giving support to somebody who is indulging in criminal activity, then you are also criminal. डेफिनेटली अबेटमेंट, बस खत्म ना। अगर कोई आदमी क्रिमिनल के साथ में खड़ा हुआ है तो तुम क्रिमिनल हो। उसके बारे में गलत कहना क्या क्या मतलब है? डायरेक्टली एन अबेटर। हाँ, कोई मान लीजिए कोई मर्डर कर रहा है, हाँ, बगल में मैं खड़ा हूँ, मैं मतलब देख रहा हूँ कि छुरी उठा रहा है, मैं उसको रोक भी नहीं रहा हूँ, और मर्डर करने के बाद जब बॉडी डिस्पोज ऑफ कर रहा है, मैं कपड़ा ला कर दे रहा हूँ, पोछा लगा रहा हूँ, तो दैट मीन्स आई एम हेल्पिंग हिम ना। You are an accomplice in that, yeah, बिल्कुल, you are an accomplice, हाँ। दादा एक चीज, अबेटमेंट सेक्शन ही है उसमें आईपीसी में, अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। एक चीज में आपका अटेंशन, आई विल हैव टू ड्रॉ योर अटेंशन ऑन अ लाइन जो मैंने आई हर्ड। बीबी दादा आप भी सुनिए। इंदिरा गांधी का कह रहे थे वो कहाँ गई थी, इंडिया में या बाहर, जब बाबर की ग्रेव पर दे बाउ डाउन, दे पेड देयर रिस्पेक्ट, राइट? वो कहाँ पर था? 1968। कहाँ था वो? वहीं काबुल में। ठीक है, अफगानिस्तान। तो दादा आपको क्या कुछ ऐसा लगता है कि ये नेहरू ने असल में अपनी फैमिली को कहा कि हम हैं क्या, लेकिन वी हैव टू कैमोफ्लैज विद ब्राह्मणिज्म, साड़ी, बिंदी, एवरीथिंग, बट वी आर एक्चुअली दिस, एंड व्हेनेवर वी गो एनीवेयर वी हैव टू शो अवर रिस्पेक्ट। नहीं तो दादा एक हिंदू बाबर की उसमें व्हाई वुड यू बॉर्डर टू इन्वेडर? नहीं, ऐसा देखने जा सकता है। आप नटवर सिंह की बुक पढ़ेंगे ना सर, एक मिनट जय भारती साहब, अगर उस बुक को पढ़ेंगे ना, मैंने पूरा बुक पढ़ा है, वो उसमें जो है वो क्या है, वन लाइफ इज नॉट इनफ करके वो जो बुक है, उसमें कुंवर नटवर सिंह ने क्या लिखा है, दैट शी आस्क्ड मी, ही वाज एम्बेसडर ओवर देयर इन अफगानिस्तान, he directed me that she wants to go to Babar grave and nobody should know it. Only you have to go and the driver has to go, no guard has to go also, because if other goes then it will be public ना, यहाँ पे hue and cry होगा इंडिया में। तो he accompanied, Indira ji was there and driver was there, Kuwar Natwar Singh was standing outside, she went inside and tears were coming out from the eyes of her. तो दादा वही तो मैं कह रहा हूं, जब मैंने सुना तो मेरे दिमाग में यही आया कि इनको पता है कि ये कौन है, एंड नेहरू कैरिड दैट लेगेसी थ्रू इंदिरा थ्रू हर टू सन, कि हम एक्चुअल में हैं कौन। तो जो उस दिन कॉल का हम लोग लेटर पढ़ रहे थे, मुझे लगता है कॉल ने कुछ गड़बड़ किया होगा। सीधी बात तो ये है, इफ सम महाराजा और बादशाह गिव्स यू लैंड इन दिल्ली एरिया और वो नहर के किनारे है जहां पर आप बोलते हो कि हम कॉल की जगह नेहरू बन गए, तो मुझे लगता है इन्हें कन्वर्ट भी होंगे वो साले, ये ओके दादा जरूर। कमें फ्लॉस करते रहे बस कि हम पंडित हैं। अगर भाई इतना प्रेम थोड़े ना होगा उसके साथ में, शेख अब्दुल्ला के साथ में इसका। अच्छा, वो एग्जाम्पल भी बढ़िया दिया गया कि पृथ्वीराज चौहान का जो है वहाँ समाधि है गजनी में, वहाँ नहीं गई है। हाँ नहीं तो दादा देयर कांट बी अ स्मोक विदाउट अ फायर। तो ये तो क्या दादा, ये इट्स, और आजकल के बच्चे सुनना ही नहीं चाहते। ठीक है, आप भी वही गलतियां करोगे जो करते आ रहे हैं। खाएंगे तो अपने आप सुधर जाएंगे। मैं तो बोलता हूँ धक्के खाना चाहिए लाइफ में, जितना जल्दी खाए धक्का उतना अच्छा है। दादा ये धक्का बड़ा खराब है। आप सुनिए, कश्मीर में जो 90 में हुआ तो हिंदू भाग के साउथ की तरफ आ गया। अब अगर आप भारत की डेमोग्राफी देखिए, हम तीनों तरफ से घिरे हुए हैं। नहीं दादा, भाग जाओगे किधर? भारत से निकल के कहाँ जाओगे? एक तरफ इस्लामिक पाकिस्तान है, इस्लामिक बांग्लादेश है, ऊपर चाइना है, कहाँ जाओगे? सर बंगाल का बोल रहा हूँ मैं, भागना पड़ेगा, वो टाइम आ रहा है करीब बहुत। आई कैन सी इट कमिंग। कहाँ जाएंगे दादा? फील इट। कहाँ जाऊंगा? यूपी जाऊंगा और कहाँ जाऊंगा? नहीं, इसके बाद भी 2050 तक यूपी से भी, मध्य प्रदेश से भी
कहाँ जाएंगे लोग? सारा कोस्टल एरिया क्रिश्चियन, और वो पाल घर में क्या हुआ? जी जी, साधुओं को इसने मारा क्योंकि सारा कोस्टल एरिया क्रिश्चियन हाँ, है। क्रिश्चियन थे वहाँ। जी जी, आपको कोई जान, हिंदू को कोई निकल लेगा वहां से? पहुंच भी गए कोस्ट तक, कोई बोट्स मिलेगी आपको? कितने लोग? अब लोग कहेंगे यार तुम यार फियर मॉन्गरिंग है। भैया ट्रेंड है। डेटा कैन लाई, डेटा कैन लाई, पीपल कैन लाई। दादा ट्रेंड्स नेवर लाई। देयर इज अ करेक्ट। ट्रेंड। वी आर लूजिंग लैंड, वी आर लूजिंग Yeah, Hindu population, we are losing our dignity and self-respect dignity. also. Yeah, how can the trends lie? ठीक है। What pains us more is this. हाँ, One बनाते day, रहो मंदिर, बनाओ खूब मंदिर बनाओ। अरे एक मंदिर बनाकर कौन सा बड़ा एहसान हो जाएगा? अरे नहीं दादा, मंदिर क्या, बस मंदिर बना दिया, ट्रस्ट बना दी, पैसा दे रहे हैं। बात करो तो फिर ये मोमिनों की बस तरह भड़क जाते हैं। जिस चीज को तुम बचा नहीं पाओगे उसको बना क्यों रहे हो? सही कहा आपने एकदम। ये गवर्नमेंट भी जो है ये भी मतलब पता नहीं क्या डिक्टेटोरियल टाइप का है कि क्या है। गवर्नमेंट को तो दादा मैं क्या ब्लेम दूं? गवर्नमेंट के लोग नहीं भी तो मैं हमारे में से निकले हैं ना। नहीं वो ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि जो इलेक्शन का रिजल्ट आप देख रहे हो, चारों तरफ जो हाल देख रहे हाँ, हो, हु इज कंट्रोलिंग होम, क्या है मतलब अभी तक मुझे समझ में नहीं आया कि वाई दे आर निग्लेक्टिंग सम इम्पोर्टेंट फॉल्ट लाइंस। ये समझ में नहीं आ रहा मुझे, वाई दे आर डिलिबरेटली निग्लेक्टिंग सर्टेन फॉल्ट लाइंस एंड पीपल आर रिपीटेडली पॉइंटिंग आउट कि यहाँ गड़बड़ है, ऐसा हो रहा है, इसको देखिए। हर चीज आप कोर्ट पे छोड़ दोगे तो नहीं होगा ना। भाई उनको भी पता है कि कोर्ट पर छोड़ दिया है तो कोर्ट्स वाले दे आर डूइंग देयर टिक टैक। वो गे मैरिज के ऊपर, बट दैट इज द बर्निंग प्रेसिंग इशू इन इंडिया। अरे सब चीज अच्छा, कोर्ट यदि अच्छा कोई वर्डिक्ट देता है तो बस द क्रेडिट गोज टू द गवर्नमेंट, अरे हमने करवाया हमने करवाया। हाँ, गलत कोई फैसला देता है तो भाई कोर्ट खराब है। इट कैन नॉट बी बोथ दादा, वेज ना। ये दो आइडियोलॉजीज ऐसी हैं, टोटल कंट्रोल करके चलती हैं। ठीक है, हमें लगता है हाँ जी जी जी, कोर्ट्स फ्री डिसीजन देंगे, कभी नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं दे सकते, देंगे ही नहीं। ब्यूरोक्रेसी अपने हिसाब से काम करेगी ही नहीं, नहीं करेगी वो। 110% मैं आपको बोल रहा हूँ। एकेडमिया आपका कंट्रोल में, ठीक है, ये टोटल कंट्रोल करके चलता है। अगर आपको जीतना होगा तो आपको कंट्रोल वापस लेना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे। द फ्यूचर इज वेरी ब्लीक। दादा इज देयर अ फ्यूचर? मैं तो ये कहूंगा आई वुड गो अ स्टेप अहेड। इज देयर अ फ्यूचर? नो नो, नॉन नो एट ऑल, दादा। नथिंग इनकंसीवेबल। जब मेरा नेफ्यू 2006 में 12वीं का एग्जाम हुआ, मैं उस टाइम जी जी नॉर्थ डकोटा में था। मैंने अपने भाई को बोला था तो इसको मेरे पास भेज दे। नॉर्थ डकोटा स्टेट यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, जी जी। इंजीनियर करनी है। और मैंने कहा नहीं, इसको नहीं भेजना, एक ही लड़का है ये वो। मैंने कहा ठीक अरे है। एक ये लड़का है तो जिंदगी भर उसको कौन खिलाएगा बताइए। हाँ, घर में बिठा के रखेगा। ये हाँ, सुनने से ना मेरा दिमाग गर्म हो जाता है। मैं बस भी एक एक ही लड़का लड़का हूँ। है। मैं तो हाँ, निकल गया था, जैसे पिताजी बोले तुमसे कुछ नहीं होगा, भाई ठीक है, मैं निकल कर अपना रास्ता चुनता हूँ, बाकी मेरे हाथ में है, जो होगा करूँगा। अपनी एक लड़का अपनी तो क्या है तो। दादा, ये होता है अपना शॉर्ट विजन और स्वार्थ के लिए। और थिंग्स आई कुड सी फ्रॉम दैट टाइम, they didn't understand what I was trying to say. Absolutely didn't pay attention what I was trying to say. और अभी भी इनको फर्क नहीं पड़ता।
कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हम बूढ़े हो रहे हैं, एक लड़का है सेवा कर देगा, हम चले जाएंगे, अरे उसका उसके भी तो बाद जो है भविष्य है, उसका भी हाँ तो भविष्य है। उसका नहीं, वो तो दादा नहीं ना। अब मैं अब कहोगे यार अपने घर की बात बोल रहा है, ये मेरे घर की नहीं नहीं, नहीं, बड़े मैं सारे घर की बात है। नहीं, मेरा घर का भी बता रहा हूँ। जैसे मेरी बेटी है, अब मैं सोचूंगा कि नहीं उसको घर में ही रखना है, तो सेवा करेगी, ये करेगी, दैट इज क्रूअल्टी स्ट्रेट अवे। इसका भी अपना लाइफ है, उसको भी आगे बढ़ना है। आई शुड ट्राई एंड help her as much as I can. After that, she'll be on her own. I cannot expect that she'll come and look after me. If she comes, very good. If she doesn't, no matter, कोई दिक्कत नहीं उसमें, doesn't matter at all. I have no expectations. और लड़कियां ज्यादा ख्याल रखती हैं आशिक के लड़कों से। मैं इससे ज्यादा जानना नहीं चाहता, यू कैन रीड बिटवीन द लाइन। नहीं, that I see in the case of my mother-in-law. I mean, my wife looks after my mother and my mother-in-law equally, and I'm proud of that. I cannot look after them so nicely in a better manner than the manner in which she looks after them. मजुमदार ये पढ़ो तो Yes, sir. Critically, no matter second paragraph. अच्छा. Second, if the British indeed wished to feign ignorance of the network only as long as it tormented the Sikhs, that would be illogical, as the Sikhs were a spent force for all practical purposes following Maharaja Ranjit Singh's death in 1839, or at least by 1846. Prasad does not explain why British inaction against the Wahhabis between 1839 and 1846, or even thereafter, ठीक है, until the अभी network. प्रसाद के बारे में बोल रहा है। प्रसाद कौन है, थोड़ा मैं पीछे चलता हूँ। ठीक है, देखो Yes, sir. फर्स्ट, राजेंद्र प्रसाद। हाँ ये पढ़ो। हाँ जी। According to Rajendra Prasad, the एक मिनट, इससे British. पहला पढ़ते हैं ना, पहले से पढ़ते जी हैं। सर। एट दिस जंक्चर से बोलो। At this juncture, it may be relevant to point out that a few scholars like Babu Rajendra Prasad, in his work India Divided, have expressed reservations about the British government's supposed ignorance of the network until 1852. Network matlab Islamic network. Citing Syed Ahmad Khan, Rajendra Prasad was of the view that the British government was aware of the Wahhabi network but chose to ignore it, since the ire of the Wahhabis was directed at the Sikh Empire up until the defeat of the latter at the hands of the British. जैसा सूट करता है वैसा ही आदमी काम करता है. Therefore, according to Prasad, the British government conveniently looked the other way until the Wahhabi problem became its own problem, and then suddenly discovered the existence of the network. इसीलिए लिख रहा है suddenly discovered. तो पहले ही था ये चीज, उनको पता ही था. Rajendra Prasad believed this to be the British divide and rule policy in action. While this might be true to an extent, Prasad's sympathetic view of the Wahhabis could be characterized as more expedient rather than factual for the following reasons. First, from the preface of the book India Divided, which was originally published in January 1946, it is clear that it was written in the backdrop of the Congress's efforts to placate the leaders of the Pakistan movement. This explains the premise. जी. ये कैमिलियन थे। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये लोग अपना कलर चेंज करते थे, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे कोई भी हो। नहीं, दुख तो इसी बात का है ना, पढ़े लिखे लोग, अच्छे घराने के लोग यदि इस तरह करेंगे तो फिर बाकी लोगों को आप क्या बोलोगे जो अनपढ़ है. This explains the premise of the book. एक मिनट दादा, सॉरी दादा आपको रोक रहा हूँ. नहीं कोई बात नहीं सर. हाँ, मैं एक्चुअली म्यूट था और दाबी दूर. मैं पॉइंट यहाँ पे क्लियर करूंगा, एक कहूंगा. वीपी दादा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कल बोला था कि उसको 100 में से 200 नंबर दिए. 200 नंबर, हाँ ठीक है, मैं उसमें कुछ कहता हूँ. भाई दादा ने भी कहा, कहते लोग कि बड़ा स्मार्ट थे, बड़े वो थे, बहुत स्मार्ट थे. दादा मेरे हिसाब से दे वर बुक स्मार्ट, दे वर नॉट स्ट्रीट स्मार्ट. फॉर पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी दे वेंट टू एनी लेंथ. स्ट्रीट स्मार्ट. बस
Book smart is one thing, street smart Dada is another thing. I would take a street smart person rather than a book smart person. They use their intelligence for their own benefit. Yes, Dada बस यही. चाहे वो सी राजगोपालाचारी हो, चाहे वो सरदार पटेल हो, चाहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी की भी किसी पॉइंट नहीं थी कि हाँ ठीक है रिजाइन कर देते, सारे रिजाइन कर देते ना. जी सर. और देखिए सर, और एक बड़ी बात, इंडिया के चारों कोने से लोग थे, मतलब कोई रिश्तेदार तो थे नहीं कोई किसी के, तो इन लोग क्यों नहीं आपस में बैठकर तय किए कि ये चीज होना ही नहीं चाहिए, हम करने नहीं देंगे. एक आदमी के अगेंस्ट में 100 खड़ा हो जाएगा तो अपने आप आदमी जो है दब जाता था. तो एम दादा आपसे सवाल पूछता हूँ. जी सर. हमारे सारे पढ़े लिखे ये बैरिस्टर कैम्ब्रिज से कितने सारे, किसी के पास लॉ में पीएचडी, ये लीडर थे या चाइना का माओ जो पढ़ा लिखा नहीं था वो था लीडर कि हमारे पर फॉरेन फोर्स, हाँ वो तिब्बत में घुस गया, मंगोलिया में घुस गया, उसको जो लगा कि ये हमारा है. ये होते हैं लीडर विजन कि दिस इज आवर्स और आई एम गोना गो एंड टेक इट बाय फोर्स. बस दादा ये कहना चाह रहा था. एक तो विजन की कमी थी, दूसरा इंडियन तो थे, इंडियननेस की कमी थी उनके अंदर. This explains the premise of the book, namely the claim of the existence of a Hindu Muslim. सॉरी दादा, फिर मैं बीच में बटेंगे. जब पीके ने बोला तो आई मस्ट से पीके विजन था. It was not a collective, it was a personal versus collective. No, it was tunnel vision. No, tunnel means a personal vision. What is for me, my family, my dynasty. There was no nationalistic or holistic vision. Vision tha. It was a tunnel vision. At the end of the tunnel, they would see their own family, their own dynastic thing. That's all. They had a vision. बस दादा यहाँ मैं म्यूट करता हूँ. विजन जो आपने बोला ना डायनेस्टी के लिए, once they saw that Pandit Nehru has clamored for his son Jawaharlal Nehru to be the president of Congress, daughter to be minister in Sampurnanand government, and then Jawaharlal Nehru was imposed as prime minister, and he started giving importance to his daughter Indira ji. तो सबको लगा ना कि जब ये सब चल रहा है तो हमारे को भी करने दो ना. He has given a license for everybody, like चलो ठीक है करप्शन करो. अभी मैं बताऊं 1962 में कस्टम्स एक्ट बना है साहब, 1962 में बना था. उससे पहले सॉल्ट एक्ट था, इंडिया का सॉल्ट एक्ट था जिसके हिसाब से कस्टम का मामला चलता था. मैं बंबई में रहा हूं, बंबई के जितने भी कस्टम ऑफिसर पुराने जमाने के हैं वो बंबई के पोश एरिया में बड़े बड़े बंगलों में रहते. कहां से पैसा आ रहा था? उस समय तो दिल्ली कस्टम था ही नहीं, सिर्फ बंबई कस्टम था ना पूरे हिंदुस्तान में. कलकत्ता कस्टम्स था, मद्रास कस्टम रहा होगा, तो बंबई कस्टम वन ऑफ द मोस्ट लुक्रियस पोर्ट जहां थे वहीं था बस. तो सारे के सारे स्मगलर वहीं पे क्यों पैदा हुए? सारे के सारे कस्टम ऑफिसर वहां पर करोड़पति और अरबपति कैसे बन गए? उन लोगों ने फिल्में भी बनाई हैं. आई डोंट वांट टू नेम देम. तुमको दिखता नहीं था क्या इन लोगों को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? पर ठीक है चलता है, क्या फर्क पड़ता है. हिंदुस्तान को बजाओ जितना बजा सकते हो, जितना लूट सकते हो लूट. तो अंग्रेजों ने लूटा 200 साल, हम भी लूटते हैं जितने साल तक मौका मिलता है. और आज भी वही ब्रीड जो है वो रूल करना चाहती है. डीके शिव कुमार ऑफ कर्नाटका इज वर्थ हाउ मच? ही इज मोर देन 1000 करोड़. कहां से पैसा आया? 23 की एज में पॉलिटिक्स में आ गया था. तो ड्यूरिंग हिज पॉलिटिकल कैरियर ही हैज मिंटेड द मनी ना. And the public knows. फिर एंड नो अकाउंटेबिलिटी. केस चलता है, कोर्ट में जाता है, वहां से छूट जाता है. नो एविडेंसेस. अतीक अहमद के खिलाफ एविडेंसेस नहीं होता था कि वो विटनेसेस को मार देता था. इनके खिलाफ क्या होता है? वो जो ब्यूरोक्रेट होता है जिसको वहां पे केस वो करना है, वो फाइलें जला देता है, आग लग जाती है. दादा अगर सिर्फ सैलरी से आप चलोगे तो 20 साल में जाके आदमी 1 करोड़ रुपए कमा पाता है, जब पूरी सेविंग कर लेता तब. कुछ नहीं है, दिखाने के लिए अलग है और खाने के लिए कुछ अलग बात होते हैं इनके.
दादा इसको खत्म करो, देखो राजेंद्र प्रसाद को एक्सपोज कर रहा हूँ मैं, पढ़ो। This explains the premise of the book, namely the claim of the existence of a Hindu-Muslim syncretic पीछे चले गए, हाँ पढ़ो। हिंदू मुस्लिम सिंक्रेटिक syncretic culture prior to the arrival of the British and the Wiley Games. That is the book's objective. That this is the book's objective is also evident from Prasad's tendency to focus excessively on the British machinations without accepting the truth of pan-Islamic movements and the widespread acceptance within the Muslim community. Critically, nowhere does Prasad attempt to examine Barelvi's stated goal to re-establish Bharat as Darul Islam based on Delvi's vision of Tariqa-e-Muhammadiyya. After all, Delvi's vision was necessitated more by the rising power of the Marathas and the Jats, and not of the British, and by the contamination of Islam through contact with Hindus. Second, if the British indeed wished to feign ignorance of the network only as long as it tormented the Sikhs, that would be illogical, as the Sikhs were a spent force for all practical purposes following Maharaja Ranjit Singh's death in 1839, or at least by 1846. Prasad does not explain British inaction against the Wahhabis between 1839 and 1846, or even thereafter, until the network's existence came to light in 1852. Third, Prasad fails to acknowledge that surely the British could not have been under the misconceived notion that a network which was nurtured within British Indian territory would pose a threat solely to the Sikhs and never turn on it. After all, in Bengal, Patna, and other parts of the country, local Wahhabis did indeed create trouble for the British, the Baraset and the Patna uprisings being clear cases in point. Such being the case, if the British were indeed aware of the nexus between the network and such uprisings, nothing explains their inaction. Finally, even latter-day authors like Qiyamuddin Ahmad were of the view that until 1852, the British were either unaware of the existence of a country-wide network of a single organization, or it did not take it seriously despite local authorities bringing it to their notice. Pertinently, Qiyamuddin was clearly sympathetic to the Wahhabi cause, and who could have blamed the vilification of the Wahhabis on British opportunism, states as follows in his book. It has already been shown that ever since 1839, and more particularly since 1852, local officers from such far-flung places such as Hazara, Patna, and Rajshahi had, had been drawing the attention of the provincial governments as well as the government of India to the existence of a remarkable nest of immigrants from Hindustan on the frontier, as also to their treasonable activities inside the country. The apprehensions of the local authorities were not fully shared by the higher authorities. However, it is worth noting that the Lieutenant Governor of Bengal himself had recorded a minute dated 26th of August 1852, observing that a correspondence exists between Patna and the fanatic in Sitana and Swat, and that it was expedient to watch the conduct and proceedings of the parties implicated, to hold in face of all this that nothing was alleged against the Wahhabis is curious indeed. The fact is that the higher authorities exhibited in the beginning a peculiarly short-sighted attitude of complacency in regard to the Wahhabi activity. The inexorable logic of facts also the hard knocks taken by the English forces in the Umbrella campaign opened the eyes of these august authorities at a later stage to the true extent of the danger. आगे पढ़ो, Again, in light sir, of the in the passage. light of this passage, I must disagree with Rajendra Prasad and the secularized school of thought he represents. That's As I it. tend to, That's it. That's it. this Secularized is school the of thought.
this is the key secular school of thought he represents, as I tend to agree with the view that until 1852 the Wahhabis managed to operate successfully under the radar to a very large extent. In 1852, a treasonable correspondence from the Wahhabis to the British troops, specifically to the 4th Native Infantry stationed in Rawalpindi, was seized by the British authorities. The correspondence revealed the existence of an organization which could supply men and arms all the way from Bengal to the northwestern frontier. Around the same time, in August 1852, the magistrate of Patna reported an alarming rise in the number of Wahhabis in the city. The British government gradually realized the magnitude of the problem on its hands, and by autumn of 1852, Lord Dalhousie recorded two important minutes on the subject, the first of which directed a close watch on the internal organization of the movement, and the second a proposal for a war in the northwestern provinces frontier. Sorry. Following this, in 1853, a number of Muslim soldiers in the British Indian Army were convicted of treason. Interestingly, by this time, the Ali brothers had developed differences of opinion on the means of achieving their objective and the timing of it. Acha. Vilayat was of the view that the English were more powerful and organized than the Sikhs and must not be confronted without adequate preparation, which Anayat disagreed with. Eventually, Inayat yielded to his elder brother and moved to Mangal Thana, returning to take charge only after Vilayat's death at the age of 64 in November 1852. With his more cautious sibling out of the way, Inayat went about implementing his vision, only to realize over the course of the next half of a decade that his brother's assessment had been correct. Inayat passed away a broken man in Chingalai in March 1858. The period between Vilayat's passing and Inayat's passing covers two important milestones. The first, the initiation of a series of campaigns by the Wahhabis against the British under the leadership of Inayat, and the second, the Sepoy Mutiny of 1857. As regards the first, Inayat's नीचे वाला premature. it is true that नीचे वाला It is true that the events of 1857 allowed Inayat Ali the opportunity to harass the British, but he and the rest of the Wahhabis were clear that their goals were not the same as those of the mutineers of Meerut or Delhi. This is very important because 1857 movement is shown as the first Indian War of Independence, which actually it was not. On this, R.C. Majumdar categorically states, it is not surprising that the Wahhabis as a body practically kept aloof from the mutiny of 1857. He underscores the fact that while the Wahhabis did attack the British before and after the mutiny, they stayed out during the most eventful period of the mutiny, thereby demonstrating the non-alignment of goals between the Wahhabis and the mutineers. Given that the Wahhabis were vastly more organized compared with the mutineers, the latter would have benefited from the former if their end goals had been the same. According to Majumdar, the only satisfactory explanation seems to be that the Wahhabis favored a purely Islamic movement and did not like to cooperate with the Hindus. This view is supported by the conduct of a number of individual Wahhabis who joined mutineers at Delhi. They, the Wahhabis, printed and published a proclamation inviting all the Mohammedans to arm and fight for their religion. A fatwa was also published declaring that it was the duty of all Mohammedans to make religious war and that otherwise their families and children would be destroyed and ruined. Clearly, the aloofness of the Wahhabis during 1857 was consistent with their central and stated belief that Bharat was Dar-ul-Harb as long as it was ruled by non-Muslims, and the British and the Hindu Sikhs were both infidels in their eyes. Therefore, any attacks by the Wahhabis on the English during 1857, if any, must be seen as a strategic furtherance of their stated goals by taking advantage of the mutiny and not
as an expression of solidarity or identity of purpose with the mutineers. Further, Qiamuddin points out that while Inayat Ali used the mutiny to his advantage by increasing the pressure on the British in the northwestern frontier, the rest of the organization and its vast network within the British Indian territories lay low to avoid being exposed. अब ये जो कहते हैं कि इंडिया में हम लोगों ने भी लड़ाई लड़ी थी, इंडिया तुम्हारे बाप का घंटा नहीं है, लड़ा। तुमने क्या लड़ाई लड़ी थी? तुम तो चाह रहे थे वही तो दोबारा मैं आ बोल जाए रहा हूँ। मुस्लिम राज यहाँ पर। उन लोग बोलता है ना इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में हम लोग भी थे साथ में, इससे तो साफ जाहिर हो रहा है। किसलिए लड़ाई लड़ी थी? तुम तो चाह रहे थे ना कि दोबारा से आ जाए मुस्लिम राज पूरा फिर से वहां पर सल्तनत आ जाए और बादशाह बन जाए, इसलिए लड़ रहे थे ना तुम लोग। इसीलिए तुम लोग गए थे दिल्ली बहादुर शाह जफर के पास कि आप जो है हमारा बागडोर संभालो। देखे कि उनका जो है राज किले के बाहर तक है, चांदनी चौक तक ही है। उनका राज तो चांदनी चौक तक ही था ना, किले के सामने तक। बाकी तो सब ब्रिटिश के हाथ में और दूसरों के हाथ में था। ये बोलते हैं ना कि 800 साल हम राज किए। ज्यादा तो आपको मालूम था ये बहादुर शाह जफर का जो है राज पालाम तक भी लोग बोलते हैं वहां तक भी नहीं था, चांदनी चौक तक ही सीमित था। अब जब से मैं जुड़ा हूँ पिछले ऑलमोस्ट साल 1.5 साल से, अराउंड ईयर एंड हाफ, अब पता लग रहा है ये जो भारत पे 800 साल हुकूमत की है, चांदनी चौक पे हुकूमत की है इन्होंने 800 साल। जी जी। हाँ प्लीज गिव औरंगजेब मी के 10 मिनट ब्रेक। जी सर, प्लीज सर, प्लीज ठीक है दादा, टेक योर टाइम सर। मैं अभी चाय बनाता हूँ, बड़े देर हो गए चाय नहीं पी। जी एम दादा, जी सर। सही बताया आपने। और अरे हिंदुओं को बेवकूफ बनाया यार, लोग जान दिए। आप बोल रहे हैं ना दादा कि आपके गांव में हिस्ट्री डिस्टॉर्ट कर जो दी लोग, ना, इसलिए जी जी लोगों जी, को नहीं मालूम चला। अरे अरे पीके, अब कौन पढ़ना चाहता है हिस्ट्री? हम यहाँ बैठकर इतनी देर से बकवास कर रहे हैं, इतने 2-3 महीनों से, कौन आके सुनना चाहता है इसको? हिस्ट्री नहीं पढ़, देखो मैंने जिंदगी में सीखा, जो नहीं किया था हो गया। अब तो हम ठीक कर सकते हैं, अब क्या दिक्कत है? अब लोग, अभी भी लोग हैं कि यार पुरानी बातें हो गई भैया। रिफ्यूजी टेंट में मिलोगे, जैसे कश्मीरी हिंदू रिफ्यूजी टेंट में थे, ऐसे ही अगले 15-20 साल 25 साल में रिफ्यूजी टेंट में बैठे मिलोगे, बच गए तो। दादा रिफ्यूजी कैंप नसीब होगा क्या 100 करोड़ हाँ जनता को? आप बताओ, पूरा पूरा प्लेनेट मिलके भी अकोमोडेट कर पाएगा? हाँ, आप देखो 2-4 लाख अगर रिफ्यूजी हो जाते हैं, 1 मिलियन 2 मिलियन, तो पूरी दुनिया हिल जाती है। आप बताओ 1 बिलियन की पॉपुलेशन को पूरा प्लेनेट कैसे अकोमोडेट करेगा? आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपको लड़ना ही लड़ना है। देयर इज नो अदर ऑप्शन। आप अगर ठीक है, आप रिक्वेस्ट डालो यूएन को कि भी ये जो 100 बिलियन आप मुसलमानों का बड़ा फेवर करते हो, हम छोड़ देते हैं, हमको अकोमोडेट करो। बोलो उससे करे। बोल बकचोदी तो बड़ी पेलता है, करके दिखा। श्रीलंका जाओगे वहां भी मार पड़ेगी, म्यांमार नहीं जाओगे नहीं, वहां भी यूएन लोग यूएन छोड़ेंगे बड़ा नहीं। जो है, यूएन बड़ा रिफ्यूजी घुसेड़ने की कोशिश करता ना, उससे बोलो ठीक है, तुम माइनॉरिटी का साथ दे रहे हो, माइनॉरिटी को पूरा देश दे रहे हैं, अकोमोडेट करो हमें। बकचोदी पेलना बहुत होता है आसान, यूएन बड़ी बड़ी बकचोदियां पेल देता है। इसीलिए तो इसराइल लेकिन मानता ही नहीं है ना, सीधा तो रॉकेट इसीलिए तो कह रहा हूँ, दाग देता है। यूएन को फालतू में बना रखा, उसको लीव करो, कह दो मार छुड़ाओ अपनी, हाँ हाँ। कह दो तुम अरे नहीं केवल जो नहीं है नहीं नहीं रेफ्यूजी यार, हमारे यहाँ इन्फिल्ट्रेट कर रहे हो, ठीक है, रेफ्यूजी कार्ड दे दे के, और हमारे यहाँ गंद फैला रहे हो। अपने वहाँ क्या कर रहे थे वो? वहाँ बौद्धों की बस्तियां जलाई थी, हिंदुओं की बस्तियां जलाई थी, गांव जलाए थे पूरे, तब ना उन्होंने मार के भगाया है। जिस जगह भी रहते हैं वही आतंकवादी संगठन बना के बैठ जाते हैं।
मार के सबसे निकालना दुख चाहिए था इनको उसी नहीं, टाइम। सबसे दुख की बात यह है कि इंडिया इज द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ दीज पीपल। जितने मतलब वहाबी हुए, देवबंदी, फलाना ढिमकाना, सबका मतलब ये तो ब्रीडिंग। गांधी नेहरू मर गए साले। नहीं तो इनको एक बार ही जो है इनका नक्का करना था हिसाब किताब कि भैया ठीक है तुमको मिल गया, तुम जाओ यहाँ से। अरे जब तुमको सेकुलर ही बनाना था भोसड़ी वालों, फिर तुमने वो जो है बंटवारा किया क्यों था? पीके पीके कंट्रोल कंट्रोल यार, कितनी बार कहा अरे है नहीं तो। दादा, वो बात ऐसी है, अगर तुमको सेकुलर ही बनाना था देश को तो बंटवारा क्यों किया था? अरे मैं गालियों की बात करूं भाई, हमारे ग्रुप में भी दादा की बोला तो है, दादा की अगर भाभी हाँ जी वो बेटियां ठीक है सुनती है दादा, देखती सॉरी, है बाद में। लेकिन हाँ नहीं आप नहीं, बताइए कितनी कितनी नॉनसेंस बात है ये वो मैं कि पता है आपको हाँ हाँ। सेकुलर ही बनाना था, आपने बंटवारा किया ही क्यों था? ठीक है, थोड़ा सा मतलब जो है अभी सामने भाभी जी खड़ी थी। हाँ सॉरी दादा, नहीं, कोई बात नहीं दादी है, को भी बोल सॉरी रहा बोलना। हूँ ना। और थोड़ा खड़ी सा थी। कभी कभी कैरी फॉरवर्ड हो जाते कि नहीं, आप, ठीक एक है, नॉनसेंस ठीक है। बात है कि आपको अगर सेकुलर कंट्री बनाना था तो आपने बंटवारा किया ही क्यों था? वो बंटवारा इसलिए किया था कि पाकिस्तान बांग्लादेश जैसे आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना तो एक अर्नेस्ट मनी दी जाती है, बयाना। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो कहा कि भाई 47 में ये बयाना ले लो, बाकी का धीरे धीरे ये चंक्स में। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आप दिए, एकदम बहुत हाँ, बढ़िया एग्जाम्पल दिया। दादा ये ये एग्जाम्पल आपने बहुत सही दिया है। भारत का विभाजन ये हुआ था, ये बयाना था। और बाकी का जो है ये 10-20% ले लो, 80% बाद में आ जाएगा। अब कुछ ना कुछ बहुत मतलब, अब क्या बताएं, हम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई आप इंडिविजुअल पैराडाइज से बाहर निकल के कलेक्टिव विजन बनाओ। ठीक है, हम चार, आपने ज्यादा ये बोला, एक पॉजिटिव चीज तो ये है कम से कम चार लोग निकल के बता तो रहे हैं ये चीज। लोग तो ये भी नहीं कर रहे थे, तो एटलीस्ट यहाँ तक तो पहुंचे हैं। अरे चलिए, कोई नहीं सुन रहा तो घर के लोग तो सुन रहे हैं। हम्म। हम लोग फैलाएंगे आगे फिर। दादा और बहुत फैला भी कंट्रोल में रहे हैं। रहते हैं, लेकिन लगातार इतनी सारी चीजें होने के बाद और लगातार चल रही हैं। ठीक है, हमारा मीडिया पूरी तरह बिका पड़ा हुआ है। फॉल्स यार खबर दिखाने के पैसे ले रहे हो आप हमसे, यानी झूठी पीके खबरें दिखाने के पैसे ले रहे हो, ये आप पीके न्यूज सल दिखा रहे हो हमको। एक मिनट, पीके बात बात वही है, वो मीडिया बहुत बार हो चुका है इसका। अभी एम दादा ने एक बात बोली, तो उस पर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ कि भाई भाभी जी देख रही है, महिलाएं देख रही हैं, तो एम दादा जी इस सर। मूवमेंट को देखो, जब तक किसी भी समाज में किसी में अगर महिलाएं आगे नहीं आती ना, जी जी जी। मूवमेंट में इतनी जान नहीं पड़ती, नहीं, खासकर ये भारतीय सभ्यता में। नहीं, मेरे घर में लोग काफी इंटरेस्ट लेकर देख रहे हैं, मैं भी खुश नहीं, हूँ। हाँ, बात क्या है कि जैसे भाभी जी सुनती हैं, तो ये भाभी जी फिर के ग्रुप में हाँ, और ग्रुप में महिलाएं। ये चीज फैलने लगेगा ना पूरा। हाँ उसमें बस। कुछ लोग नहीं, बीच में मेरी जो बात हो रही थी, तो बोली कि दो तीन दोस्तों को मैं बताया, तो वैसे ही सेकुलर वाले भी कुछ हैं, क्या यार ये सब में लगे हुए हो, छोड़ो। तो शी सेड दैट आई ट्राई टू इम्प्रेस अपॉन देम दैट यू आर फेस गोइंग टू फेस डिफिकल्ट डेज। I too was like you people, but then she tried to explain to them. Then I do not know what happened. I asked her कि तुमको क्या लगा, मतलब are they convinced? तो बोला सामने तो हाँ हाँ करने लगा, अब आगे क्या है सब समय बताएगा। एक एक महीना बाद पता चलेगा कि whether they've changed their viewpoint or not. दादा देखिए, कभी भी अच्छा आपने गाली भी सुनी होगी तो गाली नहीं, आदमी ठीक है, माँ बहन ठीक की है। देता है, बाप भाई की कोई नहीं देता। क्यों देता नहीं है नहीं, माँ बहन ठीक की? है, क्योंकि ठीक वो है। बहुत रेपुटेबल होती हैं और वही अरे स्ट्रेंथ होती हैं, इसीलिए आदमी उसी पे अटैक करता है। ये और गालियां भी एम इसीलिए दादा, ऐसी ही बनी हैं। जी सर। एम दादा, जी सर। किसी दिन आप भाभी जी को कहो कि हफ्ते में कम से कम टाइम मिले, 2 बार हो सकता है, उनकी जो ग्रुप में महिलाएं हैं वो कहेंगे जी चलो जी मजुमदार भाभी तो आई, चलो हम भी जुड़ते हैं, किसी को तो जी जी शुरुआत जी करनी पड़ेगी ना कहीं। जी जी जी।
हाँ, तो थोड़ा-सा वो भी बदल जाएगा, जैसे कोई लेडीज़ पैनल पे आ जाती है ना, तो हम अपने आप बहुत अब ज़्यादा एक बात कंट्रोल में आ बोलता हूँ मैं, जाते हैं। अब एक बात बोलता हूँ, उनको यही लोग बताया कि भैया ये स्क्रीन पर 2-3 घंटे का चलता है, उतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो मैं बोला कि भाई ठीक है, टाइम नहीं है तो धीरे धीरे करके सुनो, गायब थोड़ी हो रहा है यूट्यूब से, लेकिन सुनो तो हाँ, सही। उसका स्पीड बढ़ा सकते हैं 1.5 पे, ठीक है, 2 पे कर दें स्पीड, वो हो सकता है। 15-20 अरे मिनट के लिए आधा भी टाइम घंटा, निकाल लेना। अगर आधा घंटा जैसे सुबह दादी, आधा घंटा शाम को करके टीवी देखने का टाइम है, तो इसको सुनने का टाइम नहीं है। मैं बोला नहीं हूँ, दादा, मैं बोल ये रहा कह हूँ। रहा हूँ, जैसे दादी जो है जी जी 15-20 मिनट का टाइम निकाल लेना, जी जी कभी जी कभार, जी हफ्ते में जी एक आध दिन, और थोड़ा सा जी आ जाए तो उनकी भी बात सुन लेंगे हम। थोड़ा सा एक होता है ना, उनका व्यू पॉइंट हमसे हो सकता है बहुत ही अलग हो सकता है बहुत ज्यादा क्रिएटिव भी हो, हाँ। क्योंकि घर को मैनेज करना इट इन इटसेल्फ इज अ क्रिएटिविटी। नहीं, वो तो घर को भी मैनेज कर रही है और मेरा भी साथ दे रही है। जैसे कल हाँ, निकलूंगा तो इसीलिए। साथ चलेगी ना। ठीक है, क्या बात करता है यार तू। सोचे कभी हंसी आती है। तूने कहा कि भाभी जी की बात सुन लेंगे। मैं भाभी जी की बात सुनने के लिए नहीं, मैं भाभी अरे जी को मैं तो बुला रहा। दादी बोल रहा हूँ, मतलब मैं यार जैसे फिर काट दादा रहा है बीच बोलते में, हैं ना, बात तो बट पूरी होने। हाँ चल यार दादा। तू बोल बोल। अच्छा ठीक है सर, बोलिए बोलिए आप बोलिए। जी दादा, बोलिए बोलिए, आप बोलिए, फिर मैं कंटिन्यू करूंगा। जय भारती सर, बोलिए। दादा फ्लो टूट जाता है। ठीक है बोलो अरे यार, ठीक हो बोलो छोड़ो। जाएगा, ठीक हो जाएगा, 2 मिनट और। चलिए, मैं ये कह रहा था, जैसे कोई हमारा बड़ा होता है, जैसे मेरी भाभी भी है, तो जो है भाभी को हमने कभी, मतलब उनकी बात का रिप्लाई करा ही नहीं। जैसे हम बहू है, ठीक है, हमारी भाभी जो बड़ी वाली है ना, वो अगर डांट जी। के बोले फला काम करके आ, तो हम हम्म। पलटते ही नहीं थे, जिस साइड बोल दिया उसी साइड मुंह उठाया और चले गए। हम वो वाले टाइप के लोग हैं कि बड़ी भाभी माँ के बराबर होती है, एक ऑर्डर दे दिया, काम नहीं, खत्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। जी दादा, बोलिए। जय भारती सर कुछ बोल रहे थे। देखो दादा, महिलाओं को कभी ना बोलना कि हम आपकी बात सुन लेंगे। महिलाओं को है कि आप आके बताओ। आप क्या सोचती है वो? आप सोचती है, आप अपना वो दो, क्योंकि आदमी एक तरफ से सोचता है, महिला का सोच बड़ी डिफरेंट होती है। ये मेरा जी अपना जी। पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। नहीं, मैं सही अपनी बात है सिस्टर एकदम। को देखता हूँ। मैं भी एक कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर अपने पर्सन उस पे कुछ घर में चल रहा है। जी जी ठीक है, मैं और मेरा बड़ा भाई, ठीक है, माई सिस्टर पिक्ड अप, छोटी हमसे सबसे, मेरे से 4 साल, बड़े भाई से 6 साल। वो जी एक जी स्कूल की, प्राइमरी स्कूल की एडमिनिस्ट्रेटर है, पता नहीं पिछले कितने, उसको भी 30 साल से ज्यादा हो गए एजुकेशन उसमें। कॉन्ट्रैक्ट, जी जी। मतलब अपना बहुत एडमिनिस्ट्रेशन बढ़िया। का काम होता है ना। नहीं पता है, वो डिफिकल्ट काम है, वो सारा चीज हाँ, देखना। कॉन्ट्रैक्ट वो चल रहा है, हालांकि जो भी हो, थोड़ी मतलब लीगल। ओवरऑल सुपरविजन चाहिए, सही ढंग से चलना चाहिए ना। हाँ, कि यार कि इतना। भाई ये जो लैंग्वेज है ना, ये वर्ड, ये ठीक नहीं है, अगर इसको ऐसे कर दे। हाँ यार, इसको तो देखो, ठीक से देखा नहीं। अब मैं, मेरा भाई, हाँ ठीक है, अब मैं उसको चेंज कर रहा हूँ। अभी व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज आ रहे हैं, अभी इट्स पास ऑलमोस्ट मिडनाइट देयर, कि ये ना, इसको जी इसको ऐसे कर दो, इस वर्ड को ऐसे कर दो, कि हाँ बात तो ठीक है। तो हम लोग हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं। लेकिन मैं अब फिर कहता हूँ, नहीं हमारी ये। पूरी भारत की सभ्यता वैसे ही महिला प्रधान है, हमारी भारत। सर मैं एक क्या चीज़ कहते बताऊं हैं? सर आपको, एकदम हाँ जी। सही बोल रहे हो आप, एकदम जो बात अभी आप बोले ना, क्यों मैं बताऊं, मेरे घर का बता रहा हूँ। फाइनेंस जितना बढ़िया वो संभालती है ना, मेरे से नहीं होगा वो। क्योंकि आप तो जानते ही हो, मेरा तो मतलब कोई फिक्स इनकम उस तरह का नहीं है ना। मैं आपको एक बड़ा मजेदार एग्जांपल, आज एक किस्सा सुनाता हूँ। 5-6 महीने ठीक है। पहले जब मैं समीर के चैनल पे होता था, तो समीर ने बोला कि एक
वो एक हिंदू लड़की थी मिडिल ईस्ट में, और उसने मुस्लिम से शादी की, और अब उसके 2-3 बच्चे हैं। अब वो बन गई है एक्स मुस्लिम रब्बानी। जी ठीक जी है, शायद उसके साथ पे सुना हो। तो हुआ कि भाई वो अपना चैनल शुरू करे, सबने इनकरेज किया कि भाई एक्स मुस्लिम लड़के तो है, लड़कियों को भी करना चाहिए। चलो, लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, समीर ने कर करा के कहा, उसका लैपटॉप आ गया। ये तेजवीर भी होता था। उसकी जी जो पहली स्ट्रीम थी ना, मैं भी जोड़ा, क्योंकि थोड़ा बहुत मैंने कंट्रीब्यूट किया था। तो मैंने कहा, रब्बानी बहन, बड़े बहुत बहुत आपको बधाई हो, और हमेशा सत्य पे चला। और ये कह के मैं चुप हो गया। अच्छा, जी जी। अब आप देखिए, वहां पे एक लड़का आता है ओम, वो हर जगह होता है। हाँ हाँ हाँ। फालतू की इतनी बकवास करेगा हर जगह जाके, मतलब जो समीर बोलेगा उसको रिपीट करेगा, जो सच वाला बोलेगा उस आप मेरे पिता तुल्य हैं, और ये मतलब फालतू की। चलो ठीक है। और एक और लड़का है जो मॉडरेटर है उसका, साहिल का, उसका नाम है अमित हम नाटक। नाटा। दादा, इन्होंने पता क्या किया? हम्म। दे टुक ओवर द स्ट्रीम। और हाँ मैं, समीर आया हुआ था, मेरे समीर के पास मेरा नंबर है। मैंने कहा, समीर यार, ये लड़कियों का वो है, वी नीड टू एनकरेज कि ये लीड करे। एक दो एक्स मुस्लिम लड़के रहे सपोर्ट में सिर्फ, जब पूछा जाए तो बोले। समीर ने कहा, हाँ यार, मैं भी समझ रहा हूँ। उसने एक बात बोली, मैं अपनी मुंह में ठीक बात नहीं कर रहा। उसने कहा, जय भारती, दैट्स द रीजन आई लाइक यू, के एटलीस्ट जो प्रॉब्लम है यू कुड आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। अरे लड़कियों की स्ट्रीम है, तुम चौधरी क्यों बन गए हो? उनको बोलने दो, वो चुप बैठी हुई है। अच्छा, मैंने बोला उसको, समीर को बोला, फिर समीर ने बोला वहां पर, मैं तो निकल गया। मैंने कहा, जी बड़ी बड़ी आपकी वो। उसके बाद मैं कभी उसकी स्ट्रीम में नहीं गया। वो करती या नहीं करती, भगवान जाने। मैं आजकल नहीं लेकिन करती है, नहीं करती है। चलो, अब उसका जो भी कारण होगा दादा, लेकिन कारण प्रॉब्लम वही यही है। नहटा है, बता रहा हूँ मैं आपको। वो हर जगह घुसता, गड़बड़ करता है। वो बुलाता है उसको, मोहम्मद अली को। मोहम्मद अली आके हिंदुओं को गाली देता है, वहाँ झगड़ा होता है। एक दिन आया था, कौन सा, एक बांग्लादेशी जेंटलमैन है, उसका स्ट्रीम है, अल्लामा जस्टिस करके। हाँ हाँ हाँ, उसमें ठीक। मोहम्मद अली आया था। उसको ऐसे ही मैं घुसा, तो उनको लगा कि एम लिखा हुआ है, मुझे ले लिए। पूछने ही वाले थे मैं कौन हूँ। दिया गाली मैं एकदम माँ बहन का, मोहम्मद अली को, कि साले साले हिंदुओं को गलत बोलते हो और ये सब बेगैरत बोलते हो। तुम साले ऐसे हो कि कुत्ते से भी तुम एकदम गए गुजरे हो। और जो है तुम टट्टी से, पेशाब से पता नहीं मेरे मुंह से क्या क्या निकला। मैं बोला, तुम बगल में, तुम्हारे बगल से गुजरना भी नहीं चाहूँगा मैं। तो फिर वो निकल गया गुस्से में। और उस समय वो भी था अपना, क्या नाम है, अवगढ़ स्ट्रीम में। दिया गाली मैं कस के एकदम। आजकल मैं अवगढ़ भी वही बड़ी। करूंगा, घुसूंगा, गाली दूंगा। इस तरह के लोग दिखेंगे ना, घुसूंगा। जितना मन में भड़ास मेरा है, कहीं तो निकाल नहीं पाऊंगा ना, वो इसी जगह निकालूंगा। देखूंगा जब इस तरह के लोग हैं, दूंगा गाली कस के एकदम, जितनी गालियां आती है मुझे। मेरा दिल नहीं करता दादा, मैं शुरू से जब टीनेजर भी था ना, पता नहीं क्यों नहीं सर, मेरा मेरे। क्या है ना, मेरा जो है ड्रॉयर लॉक्ड रहता है। सब सब चीज़ का मेरा है मतलब, आर्सेनल में सब चीज़ है। लेकिन बाहर निकालता नहीं हूँ। एक दफ़े आप मुझे बोले थे ना, दादा आप बहुत कम बोलते हो, बोलते ही नहीं हो कुछ। मैं बोलना नहीं चाहता, बोलने लगूंगा तो कुछ कुछ बोल दूंगा, किसी को बुरा लगेगा, इसलिए चुप रहता हूँ। मैं खुद दादा को जानता हूँ ना कि मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ सर, मैं अच्छा नहीं हूँ, इसलिए चुप दादा रहता हूँ मैं। जी जी जी। तो मैं क्या स्ट्रीम को रैप अप कर दूं? मैंने लिंक जी तो जी शेयर करा हुआ है, हाँ हाँ हाँ, जी कर जी। दो, पर हाँ ठीक आ है। नहीं रहा, तो मैं रैप अप कर देता हूं, क्योंकि हाँ, थोड़ा सा हम लोग हम लोग अपना ऑफ फिर। टॉपिक है ना। जी तो जी। इसको रैप अप करके हम बैक स्टेज में नेक्स्ट टॉपिक भी डिस्कस कर लेंगे अब और हर दिन कंटिन्यू यही भी कर हो रहा है लेंगे। ना, हम लोग बातें करते रहते हैं, अभी चलता रहता है। तो लोग हाँ बोलेंगे कि ठीक है, ये हट कर जो है बोलते रहते हैं अपना पर्सनल बातें। क्योंकि ठीक है, स्ट्रीम की ठीक। लेंथ जितना ठीक है, रैप जितना करो, बढ़ेगी ठीक है, उतना रैप कम करो। लोग देखेंगे। मेरे को एक दो बातें करनी है आपसे, और दबे हाँ रैप दादा। करो यार। हाँ, बैक हाँ, स्टेज पे रैप कर बात देता करते हूँ, क्योंकि स्ट्रीम बड़ा होगा ना तो उतने ही कम लोग सुनेंगे। ठीक है ठीक है। तो अब हम इसी के साथ ये गांधी जी की 13वीं के साथ इनका कार्यक्रम क्रियाक्रम का समापन करते हैं।
और आपको समय देने के लिए धन्यवाद, जो आप लोगों ने समय दिया हमें, और जो फ्यूचर में सुनने वाले हैं, भविष्य में सुनने वाले हैं, उन श्रोताओं को भी पहले से ही धन्यवाद, आभार। और इसके साथ हम अपनी इस सीरीज का ब्लंडर्स ऑफ नेहरू का समापन करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सुनने वालों को मेरा प्रणाम। वंदे मातरम। जी, सबको राम, वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता।